Yeah, thank you very much. This IGNOU Kulgeet is all about Jan Jan Ka Vishwavidyalaya, how we are reaching to all regions of the country and even beyond borders, how we are trying to make sure that the most qualitative education is available to everyone in this country, and we can fulfill that responsibility that belongs to us. And yes, so may I request, as a part of our honor that we have of such distinguished guests, our vice chancellor or vice chancellors, and our experts, we have to give them a big welcome. And I would request my honorable director Malti Mathurji, professor of English, to do the honors. Ma'am, if you can give us the welcome address. Thank you. Thank you, Pramod, and namaskar, adab to all. I am so happy that I was able to put together this array of experts, and so truly grateful that they all accepted so eagerly and so willingly and so gracefully. So thank you all so much for being here with us today. Now, the ghazal has always occupied our imaginations, and as far as I was concerned, personally, मैं गज़ल गायकी के ज़रिए ही मैं गज़ल की दुनिया में मैंने प्रवेश किया। और पहले तो बेगम अख्तर साहिबा को सुना, लेकिन एक ऐसा दौर आया जब शायद जगजीत और चित्रा सिंह ने इसको जन जन तक लेकर आए। तो जो गज़ल एक तरह से एक दूरी बनाए हुए थी, वो शायद लोगों के जहन में आने लगी थी उस दौर में। And people started thinking of the ghazal as something that was accessible and not just something that could be, that was at a distance from them, that was something which only had to do with classical music or even the words that perhaps they could not understand. So that was one journey for me personally through the world of ghazal. And then, of course, I started reading up on what the ghazal is. And while I was planning this webinar, it was a journey of knowledge for me as well, because I had no idea that the ghazal was being written in so many languages. So it is, and there are so many languages that we have not been able to, adjust within this webinar today. It's being written in Bengali, in Telugu, in Gujarati, Marathi as well. So maybe we have another webinar soon, which will also accommodate these various aspects of various languages of the ghazal. And this attests not only to the popularity of this genre, क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि गज़ल तो हमारे यहाँ का नहीं है, बाहर से आया हुआ है, तो ये हमारी ये खूबसूरती रही है, हमारी ये एक उपलब्धि रही है कि हम जिस चीज़ को हम ले लेते हैं, उसे अपना लेते हैं, उसे अपना बना लेते हैं और उसे फिर हम दुनिया को एक नए सिरे से पेश करते हैं. So I think this is what we have done with the ghazal, especially when we look at it in the various Indian languages. So this has been, like I said, a journey for me of discovery. And I hope that while this webinar is on, all the others who have joined us today will also partake in that journey of discovery, trying to see how, in spite of the fact that it was not an indigenous form for India, we have still adapted it, adopted it, and made it our own. And how we have added our own, जिसको कहते हैं हमारा जो भारतीय जो एक तड़का है, वो भी हमने उसमें लगा दिया है. So the ghazal now is absolutely an Indian form, and no matter which language it is written in, it is even being written in English for that matter. So it is not only, like I said, an attestation to the popularity, but also to the fact that it is a form which lends itself so gracefully to various languages, because after all, universal emotions are the same. We are talking about love, we are talking about separation, we are talking about worship. और जहाँ हम लोग कहते हैं, कईयों के जहन में ये बात है कि गज़ल is just about love poetry, and it is, there is a lot of love poetry in it, but then it also has a very distinct spiritual aspect to it, that this love that one
expresses for one's beloved is also expressed towards a higher being. So the ghazal today is going to be explored in its various avatars, in its various languages. And I am so very thankful to all our experts who are here today. And I would like to extend a very warm welcome to all of you, sir, to our Vice Chancellor, who has always been very encouraging of all the activities that the Center for Modern Indian Languages and the School of Humanities proposes. Thank you, sir, for being here with us today. And I would also like to welcome all the heads of divisions and the directors of schools, all our pro-vice chancellors, and all the RCs, the regional directors, and all those who have joined us from the RCs. I have also gone live on our FB page, so there must be quite a few number of students who have joined in as well and are having a look at this live streaming. So thank you all very much, and a very, very warm welcome to you all again. Thank you. Thank you very much, Madam, for giving us this idea that how ghazal is a marvel of magnetic dynamism, of beauty and love, charged with a metaphoric idiom, and welcoming all our guests. Yes, what you said, that it is our own way, and how it has reflected the hopes and aspirations. We will take forward this idea and we'll listen to our experts. But now we will listen to Honorable Vice Chancellor Saab, Professor Nageshwar Rao ji. You have said so much about him, the way he encourages, motivates us. And if I may request him to speak and to guide us about this, may I also add that he has been a teacher for about 4 decades now, and he, as an educational administrator, he's the senior most person in the country, and the way he connects to this academic landscape of ours is unparalleled. So we are so glad, we are so honored and privileged to have your company. And this, the way you link yourself with languages, this is even more special. So we are so keen to listen to you, sir. Please enlighten our understanding on this theme. Thank you very much. Over to you. Professor Nageshwar Rao, Honorable Vice Chancellor. क्या हुआ? I think there is some kind of a technical problem, because I think he has logged out again. What I heard that he is logging in once again. Yeah, he's here. Yes. He's here. So, sir, yes, thank you very much for your presence, everyone. In this Google Meet and across our social media platform, everyone is keen to hear you, sir. Good morning to all of you. My video is not functional right at this point of time, but I think you all can listen to it. Is it audible? Yes, sir, we can hear you. We can hear you, sir. So good morning to all of you. First of all, I welcome all our distinguished guests who are present over here to express their ghazals in different languages.
respected Professor Radha Vallabh Tripathi ji, known figure in the field of Sanskrit. He is going to talk about the Sanskrit Ghazal in the 20th and 21st centuries. Kashmiri Ghazal in Professor Majroor Rashid, Punjabi Ghazal, Professor Jaswinder Singh Saini, Urdu poetry, Professor Ahmad Mahsoub, Hindi Ghazal, Madhav Kaushik, English Ghazal, Professor Anisur Rahman, all distinguished experts in that field. They are present over here. And it is a great initiative by the School of Humanities and also the Center for Modern Indian Languages. Because when the proposal to set up this Center for Modern Indian Languages, it was being proposed by the director SOH, Professor Malti Mathur, I was just thinking that what they will do in the beginning. But now I could gather the type of initiatives which they are taking. They are quite useful to all of us. Because 6 Indian languages, I never imagined. Normally the Ghazal, it is being linked to Urdu and to a certain extent Arabic also. Kashmiri, yes, we can also link to it, but never thought about the Sanskrit Ghazal. Then English Ghazal also. But now all the Ghazals, they have been put, because maybe Madam is knowing about the English Ghazal also. So that is why she could link. Hindi Ghazal also, she could link it. So that shows the justification of the Center for Modern Indian Languages also. I must compliment her for taking such innovative steps, especially when the National Education Policy is talking about that the languages, they are to be strengthened. The language base that is to be strengthened. And in that perspective, looking to all these languages and trying to find out that what are the common things and how they can be interlinked with each other. That is the greatest initiative. And I have seen the numbers also continuously. The people are trying to connect with us to have these ghazals being heard by all those people. Because when you start listening to ghazal, it enhances your concentration power. The mind power, it is being strengthened. And further, the innovation capability, that is also being strengthened. It is always being said that whenever you strengthen your right hand side of the brain, your innovation and creativity, it goes up. And right hand side of the brain, it is being strengthened only through the music, the dances, or the ghazals. And that is what the right thing which has been initiated by the School of Humanities. And we see that the distinguished experts, they could spare time for all of us. A great moment. It is a historic initiative. Especially I must compliment the Director, School of Humanities, Professor Malti Mathur. And she was eager to have it for the last 6 months or so. But somehow it could not materialize in physical mode. But even then, we may do it in due course of time, because already we have created this center. Now the center, it will look into it, how to go for it. And once we see that this experience, this will be quite useful to all of us, how we can inculcate these things in our teaching learning process, that also we can look into it. Great initiative and great innovation also. I must welcome all the distinguished experts. Dr. Anand Prakash ji, Madhav Kaushik ji, Professor Ahmad Mahsood ji, Professor Jaswinder Singh Saini ji, Professor Majroor Rashid ji, respected Professor Radha Vallabh Tripathi ji, Professor Anisur Rahman ji, and you all. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. Your support, your encouragement, your guidance is very important. And we really value this. You have set the tone for this program. And I think with your blessings, we'll achieve success in our efforts. Thank you very much once again.
When we are like, as we all understand that the ghazal form is ancient, tracing its origins to 17th century Arabic poetry, and it came to South Asia around 12th century due to the influence of Sufi mystics, and now mostly prominent as a form of poetry in many languages of the Indian subcontinent. And due to its highly elusive nature, the ghazal has proved capable of an extraordinary variety of expressions around its central themes of love and a bigger worldview. The ghazal tradition is marked by poetry's ambiguity and simultaneity of meaning, and it can usually be interpreted as love for a higher being. I think on this note, we have Dr. Anand Prakash, who is with us to guide us as to how we understand this domain, and the topic that he has identified for himself is a prologue to ghazal, and he'll be reflecting on Indian literary traditions. May I request Dr. Anand Prakashji to come occupy the dais and address all of us on this important occasion. Thank you, sir. If I could make a very short intervention at this point, please feel free to be bilingual, trilingual, or whatever makes you feel comfortable. Because we are talking about ghazals in so many languages, so हम सिर्फ इंग्लिश में ना बोलें, हिंदी में भी बोलें, और जसवंदर जी तुसी तो पंजाबी विच गाल करो जी, it will be very nice. So all of you absolutely feel free to talk in whichever language or to mix up your languages. That would be really nice. Thank you. So good morning to all of you. I hope I'm audible. Can you hear me? Yes. Yes, yes. Okay. Good morning, and it's a pleasure, that I'm meeting many friends here, and this is an occasion to share one's views on this aesthetic form, and I feel really privileged. In fact, when Professor Malti Mathur talked to me about it, I started taking notes, making notes, that is, and when I used longhand, then finally I saw that I had written the whole paper. So I felt also very excited, that there are so many things to be said. And I have a written paper that will save time also. I'll stick to, 20 minutes that are allotted to me. And I start by saying it's an honor and a privilege to be a part of the proceedings in the webinar. The subject is of my interest, and I've long been engaged in my mind with the issues and problems concerning the ghazal tradition. I express sincere thanks to Professor Malti Mathur, who gave me this opportunity to share my thoughts on the subject. Professor Malti Mathur is herself a poet who stands high in my esteem and is an extremely sensitive and honest poetic voice. I'm also aware of the presence of another poet among the organizers, Professor Nandini Sahu, widely published and discussed. The presence of Professor Nisbar Rahman in the group of speakers is not just rewarding, but also empowering. In the form of a book, he has a fine study of the ghazal to his credit. Let me straight away begin with the ghazal and say that it has been one of the most important forms of poetic expression in the world languages in the previous millennium, and continues to hold a place of immense value in our century. It has a long history and a compact form that has kept evolving as time progressed since it came into being in Arabic in the 7th century. So I really marvel at the richness of this form, that it appeals to people, and it compels them, inspires them, encourages them to make an experiment in this form. Scholars associate a bit distantly, though,
with the qasida that was long-winded and unwieldy and tested the patience of the listener that was long back in Arabia. Thus, it might have been thought that the spirit of the qasida, paying encomiums and offering high praise, could be given a tighter frame, compelling brevity, wit, and charm. In the name of the ghazal, this new form struck roots in Arabia and traveled to Persia. The time segment in question would be 10th to 12th centuries. It's as old as that. The Persian literary route then led the ghazal to India in the 13th century, where it crystallized in its new avatar, the mix of classicism with the folk in the hands of Amir Khusro. It was a thing of beauty, close to the soft, erotic sentiment dwelling in the human heart. Amir Khusro would combine Persian and Braj Bhasha to form the basis of what we know as the Indian ghazal. The chief component of this ghazal was the word music, the rhythmic and patterned sounds keeping company with waves of feelings waiting to emerge before the expectant eye. To it, even the divine being was a source of sensuous association. Later in the Mughal period, ghazal had to contend with genres of doha and lyric that were popular in the period of bhakti poetry. Indeed, the mystical or Sufi influence that came from Persia and prospered in the poetry of Amir Khusro helped the ghazal breathe easy and appeal to the alert, emotional audience. True, ghazal was perhaps not of much value to the common masses, but it preserved its newfound aesthetic sense to grow in a favorable climate later. Its immediate requirement may have been the listener well versed in artistic communication, even as the underprivileged and deprived sought emotional sustenance from it for the obvious and simple vocabulary of the less literate. This is to be kept in mind that initially, a ghazal would be available in its artistic form only to the people who were placed high on the social ladder. The 16th century and 17th centuries shaped the ghazal in the environs of a changing India, struggling to put away the weight of classicism imposed by Persian and Sanskrit, even as the many dialects of North India vied for acceptance and new norms of versification. I particularly refer to this period between the 16th and 18th centuries, because this is when the form of ghazal is actually brewing. It is coming up, it is struggling, and now it has to connect more and more with the masses and with the larger humanity. Earlier it was transcendence, it was a kind of Sufism, but now it is contending with the social pressures, even the political and cultural pressures of the time. So I give a kind of credence to this particular period. The ghazal had to take hint, if not guidance, from such a process, which was further strengthened by the fresh creative air flowing from the Deccan. The Indian ghazal has a lot to owe, to the tradition that formed itself in a very lyrical and sensuous way in Hyderabad, Deccan, and from there the ghazal came back to us in North India. The keen observers of this literary phenomena give credit for truly Indianizing the ghazal to Wali Dakhini, the great poetic experimenter. He was a kind of a pioneer in the field of Indian ghazal writing. He experimented with language, he experimented with simple feelings, emotions, and he gave them that kind of aesthetic beauty, which later on became the treasure of the Indian ghazal. And he had a kind of prowess with lively articulation. Wali Dakhini or Wali Gujarati, his spirit to connect writing to the language of common use bore fruit. And the 18th century, from its different centers of learning in Delhi, Lucknow, and Hyderabad, Deccan, interacted to give a definitive character to the ghazal that would through time push to the periphery the popular doha and lyric so strongly entrenched in the literary culture of India. So one can say, that a kind of struggle
at the level of art, at the level of aesthetics, was there between the Bhakti tradition and its main instruments, doha and the song, and ghazal that had a root elsewhere than the village masses at that point of time. On its side, the new shape and role of doha did not prevent one bit the upsurge of the ghazal. In fact, the two would have strengthened each other. Consider the highly suggestive, pithy, and newly become rather elitist doha. In the 17th century, doha becomes very elitist. It's not the same as that of Kabir in the 15th, 16th centuries. So doing service for the court, then the life in small towns and villages where it truly belonged. The poet of Ritikal, Bihari Lal's dohas, come to mind. In that regard, in finesse and polish, Bihari's dohas came to resemble the chiseled shares of the ghazal, but the ghazal had meanwhile begun to seek support from the common masses. So you can see that the kind of thing that Bihari Lal says in his dohas, and he also puts a lot of stress on the brevity of language. That thing might have helped ghazal become directly relevant to the Indian conditions, particularly at the village level. Miraculously thus, doha and lyric made a place for themselves in the heart of the ghazal. As suggested, we can spot doha in the sher or couplet of the ghazal and lyric in the broadly connecting nature of the ghazal poet's mental state, sad, dissatisfied, or impatient. I'm aware that, in the ghazal, every sher has to be different in theme, different in stress, different in interest, and yet, because of the words put together and the meter being there, controlling all the shares, it starts in at least creating the sense of a state of mind, and that state of mind binds one share with another, even within the ghazal. It's a contentious point and requires further exploration. We might note the independence the share as a singular entity enjoys in the ghazal, which is not the case with Bhakti poetry's song. Meanwhile, the ghazal went from strength to strength on the impetus it received from Mir Taqi Mir, which is 18th century, Mirza Ghalib and Nazir Akbar Abadi, which are 19th century, to Hali, Iqbal, and Akbar Allahabadi. They are all within the range of the 19th century. Not to mention Zauq, Daag, and Bahadur Shah Zafar, the last Mughal, who also contributed a lot to the writing and conceptualization of the ghazal. Is there a link, I raise this question, between the ghazal form and feudalism? The latter's affinity with Sufism, alongside a clear engagement with the dialects and the folk notwithstanding. There is a kind of tension that is there even in the ghazal when it contends with the idea of feudalism. So feudalism will go for hierarchy. Ghazal is a leveler. Feudalism will always talk about the elite, but the ghazal would experiment with the common idiom at the same time. That shows tensions as well as alliances with the times when ghazal adapted itself to the surroundings in the existing tastes and choices. Ghazal catered to the high-placed cultural groups fostered by the court and the many centers of power, even as its structure caught the rhythms of contemporary life. One is to keep in mind the day-to-day goings-on that invisibly led to a different set of priorities and traditions and confronted the ghazal with new requirements of culture and thought. We have to keep in mind that medieval India is not a static India. It's an India which is always evolving. There are rulers, they have their policies. Those policies have a close eye on the needs and requirements of the people, and therefore the economy is going from one phase of development to another. At some point of time in medieval India, particularly from 17th century onwards, there is a decline in the economic and the social power, because of which certain problems occur. And all artistic forms, including the ghazal, do not remain untouched by such a difficult process. So I say that ghazals cater to the high-placed cultural groups fostered by the court and the many centers of power,
even as structure caught the rhythms of contemporary lives. You can see the dialectic there. One is to keep in mind the day-to-day goings on that invisibly led to a different set of priorities. Invisibly, the whole thing cannot be proved, by giving references to what actually happened vis-a-vis the ghazal at that time. But then, if you read the ghazal, and if you read the ghazal in sequence, and you see that something is written in the 17th century, for instance, a large number of kayasthas write ghazals very well. And in fact, they outnumber their Urdu counterparts at that time. And yet, the ghazal is flowering and prospering all the time, irrespective of who is writing it. Also, how does ghazal relate to modernism? Now, modernism is important. It is with us. We are still modern. Enlightenment and full-scale capitalism setting foot in 19th and 20th centuries. So ghazal doesn't die. Ghazal adapts itself further. It is very tolerant. In fact, not just tolerant. It's a kind of a learning and interested in learning human activity. We might take cognizance of the popularity the world over that ghazal has earned to get at the complexities of imaginative writing and cultural trends, to which reference has been made by our Vice Chancellor and Professor Malti Mathur. In the 18th and 19th centuries, yet more so in the 20th century, ghazal has enthused and inspired, and one can go back to the late 18th or early 19th century, in the earlier part of history, the likes of Goethe. They take interest in the ghazal and also attempt certain ghazals in German language. A large number of German Orientalists, as well as poets in Spanish and English, affecting ways of creativity in the United States and Australia as well. So you can see that the sphere of influence of ghazal has increased the world over with the passage of time. When modernism and the trend of the absurd around the two world wars took away the vitality of European writing, ghazal seems to have infused blood into the contemporary capitalist art in the Western world. So you can see that even though the world is taken up with capitalism, with imperialism, and with so many cynical ways of ideology, even then the ghazal is able to counter all these and keep the listeners and the writers human. Coming to the Indian cultural scene in our own time, where secular and modern imaginative writing is embedded, let us consider how ghazal has responded to the challenges and pressures for spreading its scope and influence. That is the point of interest for us for this seminar, how we came to the kind of ghazal that we have today, and that it has a long history, but then the history finally crystallized itself in the form of modern day writing. No longer is the ghazal confined now to one language or region, on which account its appeal has multiplied manifold. In even as contested an area as one where the Hindi-Urdu debate has squared the pitch, we are struck by the energy ghazal has generated. From Mir, Nazir and Ghalib to Firaq, Faiz, Ahmad Faraz and Dushyant Kumar, not to mention Sahir Ludhianvi, Parveen Shakir and Bashir Badr. Ghazal has flourished in its rich ideological coloring and variety as seldom before. From ghazals of this illustrious group of poets, it has been appropriated by a large number of ghazal poetasters that, to quote Alexander Pope, rave, recite, and madden round the land. Now, ghazal appeals, that's how it should be. Now, ghazal appeals to the writing mediocrity who succumb to its charm and employ it in their verses for interesting wordplay, experimental rhyming, and far-fetched similes. There is much in modern ghazal writing to absorb as well as counter that which occurs in the world unfolding before it. The points I've raised in this kind of overview that Professor Malti Mathur wanted me to give, I said that ghazal has a history. It also has the urge to grow further, to grow out of history and orthodoxy and the established conventions. And the soul of the ghazal is basically experimental or experimentative. So this is the point I tried to make.
And I say that ghazal is not an elitist kind of artistic creation. It's not done in a corner, keeping completely shut to the reality around it. And the writer is an aware person, is a conscious person, one who makes mistakes, one who corrects one's mistakes and learns from experience. And all this is reflected very closely in the writing of the ghazal. So this is my general point that I made. And I'll conclude now the discussion with a brief comment on the form of the ghazal. We observe that the ghazal enjoys a unique internality. It has an internal structure. It has a world of its own. It is closed in a way. A structure that binds its components and their viewpoints as well as truths, united inherently by a tight thread of meter and rhyme scheme. So you can imagine that inside itself, the ghazal is very tight. Outside, it is very appealing, very open. So this kind of dialectic that appears in the practice of ghazal writing and it's shared and it's being shared by with people outside, that is something that we have to ponder over. Whereas the meter is uniform, the rhyme scheme has a peculiarity its own. The latter sticks to a pattern under which the second, fourth, sixth, and the rest of the even lines rhyme. This is the kind of thing that in English, I don't have enough knowledge of the European languages, but so far as English is concerned, I say the only close thing that would appear to ghazal would be sonnet form, which is as strict about the number of lines and the rhyme scheme, even though there are lots of dissimilarities. But this point regarding similarities between the sonnet form in Europe and England, maybe also in Italy, because Italy initially was the source of sonneteering, to ghazal. So there is a possibility of trying to understand the strengths of ghazal on one side and the strengths of the meter on the other, and sonnet on the other. And thematically too, the two initially were regarding love. The first couplet, however, within the ghazal that I'm talking about, has both of its lines rhyming. In the last couplet, there is a desirable, not compulsory option of mentioning the writer's name. All these are to be rigidly adhered to, except the last part. What purpose does it serve? My hunch is that original practitioners of the verse form called ghazal had a fairly good idea of the art of dancing. A Sufi saint raising hands and dancing around in ecstasy in the middle of singing in a gathering comes to mind. The scheme was arbitrary to give a sense of discipline to the writer and to tell her that she lived in an ordered world with its norms. Ghazal tells us this. No playing with the convention per se. You can't play with the established conventions of ghazal. And maybe the same message is being sent by ghazal to the ordinary people, that so far as the structures of society are concerned, they don't have to be played with too much. At the same time, though, the convention or pattern to be stuck to had at its center the model of home with walls and the ceiling and windows. The lines of living had been drawn, and within them, the writer could perform his or her dance. Once defined, the regulations gave ample scope of freedom to the artist, twisting, turning, determining length of steps, even taking strides, increasing or decreasing the speed, jumping, stopping suddenly, and restarting if one wished. Ghazal preserved to the artist the idea of the play field. That said, the ghazal as a form necessitates talking or conversing with oneself or an alert listener, particularly one with knowledge of nuance, subtlety, wit, and a concealed message. Mark the last. The ghazal may not be telling you much with respect to ideas, but it sends a message across to you as a listener. This has presumed that the area to be covered in the ghazal was one of romancing, of asking a favor. The assumption that the request could be denied softly or bluntly. A woman or lover with one's whims and fancies would be at the other end. In the obvious sense, the subtlety of truth was at the back of the person or power addressed. Even the divine being
would be imagined as a friend, difficult or easy to come to terms with. Also, ghazal is a performative art. Imagine the working. The ghazal writer, as an individual person, stands before a scene with many struggles going on in front of him, even as he is caught in a trance. The act of composing the verse fills him with a heightened sense vis-a-vis emotions and word choice. But in his solitude, he is one with all those who are actively perturbed and unsettled. They would remain away from the poet physically, even geographically, but will speak through him. The process is mysterious, but turns real when the finished ghazal is shared with all those others, literally or metaphorically. Therein perhaps lies the fun and magic of this art form. And I just end the discussion with an anecdote. Ghazal is infectious in appeal and has found great company in music that took it to the mass of audiences in listeners across regional boundaries. Once in a Delhi University gathering, Faiz was asked to recite a couple of his ghazals of his own liking, and he queried, which ones, of Mehdi Hasan or Runa Lala? Thank you. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश जी, जिस अंदाज से आपने बात कही है, जो हमारे न सिर्फ इस गूगल मीट प्लेटफॉर्म पे, पर क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जा रहा है, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जिस हिसाब से आपने उर्दू की के बाहर जिस तरह से गज़ल की अपील है और इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में बात बताई, ये भी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि कोई एलिटिस्ट तरह से कोई तो वो नहीं है फॉर्म, बल्कि बहुत ही पीपल्स वॉइस है। और जो मीर से शायर की बात करी आपने, बहुत बहुत है, और फॉर्म पे जो आपने कमेंट किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बहुत देर तक, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है सब, और ये हम उसको और गहराई से समझेंगे और तरीके से। इससे अब हम अगले कदम पे चलते हैं, और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे और जो प्रोफेसर मजरूर राशिद जो हमारे साथ हैं, इज अ मैन ऑफ ग्रेट स्कॉलरशिप, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमें बताएं कश्मीरी गजल और जो उसमें एक ट्रेडिशन है और एवरीबॉडी। प्रोफेसर राशिद, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं कि कश्मीरी गजल कैसे हम देखें, उसमें जो ट्रेडिशन। हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। It's a pleasure to be with you, scholars like Professor Rahman, Malti, for having invited me to be a part of Kashmiri Ghazal, development and experiment, tradition, and all other things that have happened to this genre in Kashmiri. Before I talk about the development and growth, I would like to say something about the history of Kashmiri poetry. Kashmiri poetry began with works that were written by Lala Arifa, popularly known as Lalamo. Was Bach, and what she expressed in her box was or were her spiritual experiences and expressed that experiences in work. Her younger contemporary, Sheikhul Alam, known as Nundareshi, also wrote in that same form, but his verses are known as shuks.
both of them, both Lal Ded as well as Sheikhul Alam, they relatively ignored the terrestrial aspect of human life and loved the Lord only. Later on, after a long hiatus, Haba Khatun dawned on the scene of Kashmiri poetry. She sang of human love. And the form she wrote in is known as Vachan. You may call it Vachan in Hindi or something else. And it is very close to Geet. And the chief persona of this form is mainly a lovesick woman who suffers from the pangs of love and yearns and longs for the beloved. This is the beginning, and this is the era before Ghazal came into Kashmiri language. When we look at the annals of Kashmiri poetry, we see that it was actually in the 18th century when the official language of Jammu and Kashmir, that day was only Kashmir, it was Persian. And after the advent of Islam, Persian prosody, Persian forms, Persian genres all came to Kashmir. But it was only in the 18th century that Ghazal was introduced as a form and a genre in Kashmiri language. And it was introduced by those poets who were essentially Persian poets from Kashmir. It was Baba Kamal and Mir Abdullah Bayhaqi, who wanted to get rid of the folk way of expression that was much popular in Kashmir those days. And the only tool that was used by the poets as a medium of expression was Vachan. And it was a kind of a collective expression. These people, they had a knowledge and orientation in classical Persian literature, especially Persian poetry. They wanted to get rid of this collective way of expression and to introduce Ghazal in Kashmiri and to give it a serious form wherein intellect and spirit and art, personal poetic talent, individual talent comes into play. But the fact remains that the Ghazal as a form did not flourish in the 18th century. Yes, it got introduced in the language, but it could not and it did not flourish. It could not blossom into a form which could attract people. And after the 19th century, Vachan remained the most popular medium of Kashmiri poetry. But in the 19th century, two genres and two Persian literary genres and forms, Mathnavi and Ghazal, virtually became the main medium of expression in Kashmiri language. And Kashmir produced a master Ghazal writer who is known as Rasul Mir. He sang of beauty. He sang the beauties around. And he sang of human love. And he liberated Kashmiri poetry
from the folk way of expression and gave it a standard and an artistic pattern. Many people try to write like him, but nobody could excel him or come close to him. His senior contemporary and in a way his teacher Mahmud Gami did write very good matnavis and very good watans, but he could not write ghazal the way Rasul Mir could. He was a great singer of ghazal. He was a musician also. I will just present a verse, a Kashmiri verse of Rasul Mir. Just give me a minute. Gum Shabnam Gul Rakhaspet Zanch Arkdantas Gul Rakhaspet Gum Shabnam Gul Rakhaspet Zanch Arkdantas Zunipet Tarak Pakan Karyu Gagundurdan. What it is very difficult to translate this verse, but somehow I will try to translate it. The poet says, the sweat on the cheeks of the beloved dazzled on the rosy cheeks as if stars were walking over the moon. So you can imagine how Rasul Mir praised beauty, female beauty, and how he gave Kashmiri poetry, Kashmiri ghazal, a local name and habitation, to quote Shakespeare's words. After Rasul Mir, Mahjur, who is known as Shairi Kashmir, also, he used this genre, this form, as a medium of his expression. But unlike Rasul Mir, he used Kashmiri symbols, indigenous symbols. Bhumbur Yimburzal. His ghazals are full of pastoral imagery, whereas Rasul Mir, the master of ghazal, he mostly adhered to Persian symbols, Central Asian symbols, Central Asian metaphor. But Mahjur deliberately made an attempt to liberate Kashmiri ghazal from the influence of for the boring influence of Persian poetry. He infused a new kind of blood, a new kind of emotional verve to Kashmiri ghazal, and he also sang of human love. Though he admits that he has a great impact on his ghazal, great impact of Rasul Mir on his ghazal. But when we look very closely at his ghazals, he is a different poet. He does not only sing does not sing of love only, but the happenings and the demands of the time he was living in. He was taking cognizance of the times, of the milieu he lived in. Because those were the times when modern education had come and schools had been opened in Kashmir, and new education, new kind of education, modern education, what we call, it was in vogue. He was well read in Persian poetry.
He was well read in Urdu poetry. He had read Ghalib, he had read Iqbal, he had read Mir Taqi Mir, and he had a great influence of all these poetries. But he made a conscious attempt to liberate Kashmiri poetry from the influence and created new and a fresh idiom in Ghazal. And he tried to adhere to the meters that are meant for writing Ghazal. You cannot write Ghazal without a meter. You cannot write Ghazal without meter, without technique, because the technique of Ghazal, the Ghazal is essentially, it is a meter. There are so many meters. And I don't believe Professor Inisur Rahman would disagree with me. I know he will disagree with me, but I don't think that Ghazal can be written in English language. It is impossible. It cannot be written, as we cannot write blank verse in Urdu or in Kashmiri, because blank verse has a meter, and with pentameter, we can't write. But to write free verse and other things, that is a different thing. But Ghazal, to be written in English, for me, it is impossible. But in Eastern languages, it is possible. In Urdu, in Punjabi, in Kashmiri, it is possible. But for English, it is impossible. It can't be written because there are certain meters, and if you don't adhere to those meters, you can't write Ghazal. Anyway, this was a digression. After Mahjoor, his younger contemporary Abdul Azad, who was essentially a leftist, had leftist leanings, he used Ghazal as a tool to propagate and to express his feelings against the against feudalism, against the exploitation that was done to masses. And he he created a new poetic idiom, different from his senior contemporary Mahjoor. Totally a different medium. एक ऐसा मीडियम जिसमें एक मर्दाना क्या कहते हैं उसको उर्दू में, एक मर्दाना लब लहजा था उसमें, और उसने कश्मीरी गजल को गरीबों की और आवाम की जो इस्तेसाल हो रहा था उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसका इस्तेमाल किया. And when we look at his ghazals, we come across a great man, a strong man, and a courageous human being who confronts life with all power at his command. And I will just refer to one verse of his. Tulmeen panan sari samyuk bor kalaspet. Tulmeen panan sari samyuk bor kalaspet. Malkan ta falkan lardtao dishiti jigarmyo. I carried the burden of times on my shoulders. Angels in heaven got frightened and stunned. This was his way of expression. It's a totally different way of expression. But everybody knows what happened in the early 40s in every literature, whether it is Hindi, whether it is Punjabi, whether it is Kashmiri, whether it is Urdu literature. Progressive movement was in vogue, and every intellectual poet was influenced by Marxian point of view and was writing under the influence of Marxism or progressive movement. Kashmiri poets also were influenced, greatly impacted by this progressive movement. Urdu did create a Faiz Ahmad Faiz,
under the influence of progressive movement. But I'm sorry to say that we could not create a phase-like poet in that era when progressive movement was in vogue in Kashmir and everybody was adhering to its principles and to its demands. But I must admit one thing, that progressive movement helped Kashmiri literature in general and Kashmiri poetry in particular to grow, because it helped Kashmiri poetic idiom to grow, poetic idiom to blossom into a serious way of expression. The ghazal that can represent Kashmiri ghazal was actually written after the 60s of the last century, when poets like Dinanath Nadim, Amin Kamil, Ghulam Nabi Firaq, Rahman Rahi, and Ghulam Nabi Khayal like poets departed from the progressive movement and understood what was happening around, what was happening in Soviet Russia those days, what Stalin had done, and what was its impact on them. And on the other side, modernity or modernism was a reality. They could not escape from its influence. They rather imbibed influences from various directions, including modernism, of which absurdity, alienation, existential crisis were the distinctive features. And when we read ghazals of Nadim, Kamil, Firaq, Rahi, and others, I would recite some verses by them in Kashmiri, so that you also, I have some verses with me. 1 minute, you will bear with me. Dinanath Nadim wrote, I will just quote one verse of Dinanath Nadim. He says, Halaschu rotul, halaschu pyar. Halaschu rotul, halaschu pyarun. Cringe lev, punya tisaru. I will try to translate it. It is still pitch dark. Still we have to wait. We are condemned to carry water in the willow baskets. Now I will quote Amin Kamil, a verse by Amin Kamil. Tikte lagit band lifafan mans. Tikte lagit band lifafan mans. Be pata khat dakhanik is. We are letters with postal stamps stuck onto them, but without a name and without an address. In one more verse, he says, Wal danvai raksat was, wal az sadkan meno raat, wal danvai raksat was. Let us both avail casual leave today. Let us wander along with the pathways. And Rahman Rahi, one of the outstanding poets of modern Kashmiri ghazal, I will quote one verse of him. Sevej sang athan hind, kathan de kotar muj. Sevej sang athan hind, kathan de kotar muj.
Siarud Jerenman Gosan put Pedra. O ascetic, O ascetic, the lamps your hands lit up, and the dows of your birds, all are gone. Whither should you go in these dark showers of rain? Another poet, Ghulam Nabi Khayal, says that Burj Pashan tan filn gulale, Burj Pashan tan filn gulale, yan yet lairiman tau khabarkus. The slopy rose gardens of my house did not blossom with poppies when some unknown spirit sneaked into my house. After this great galaxy of poets, some new faces came in the 80s. In the 70s and the 80s, they include Rafiq Raz, Shafi Shok, Naseem Shafai, Munibur Rahman, Shahnaz Rashid, M.H. Zafar, Ali Sheda, Shabir Ahmad Shabir, Nazir Azad, Shafaq Sopori, Farooq Fayyaz, Mahfuza Jan, Rukhsana Jabin, and Nighat Sahiba. Rafiq Raz among them is a poet who shares his poetic world with the English romantics. I know that he has not been a student of English literature, but he shares the spiritual world with them. And he has been able to face the absurdity and the alienation that modern poets are confronted with, because he has his own spiritual world and he has mystic and Sufi leanings. But as compared to him, Shafi Shok and Munibur Rahman are two different people. They look into the reality, into the eyes of reality, and face and confess that the life, the situation they are in, they are confronted with, is hostile, is not friendly. So we see a kind of alienation in these poets. May I A request? feminist trend also. May I request you, sir, to Yeah. conclude, please? But give me 2 minutes. One of the most important aspects of Kashmiri Ghazal is the Ghazal that was written and is being written and has been written by Kashmiri women poets. And Naseem Shafai is a leading poet in that case. She has feminist leanings, as has Rukhsana Jabin, Mahfuza Jan, and Nighat Sahiba. They deal with the issues that feminists have been dealing with. When I read Naseem Shafai, I am reminded of Kamala Das, I am reminded of Judith Wright, I am reminded of Parveen Shakir. I am reminded of every feminist poet that has come into being. So there is no time. So I must conclude. I must say that Ghazal is one of the most prominent forms of Kashmiri poetry, and it still attracts poets, and people do write very good poems. Even new boys have started writing ghazals in Kashmiri, and this river, this is flowing, it is going on. More people are coming,
and very good ghazals are being written nowadays. And I hope this trend will stay there, and Kashmiri poetry will be enriched by the ghazals that are being written nowadays. Thank you very much. थैंक यू प्रोफेसर राशिद, आपने जिस अंदाज में जितनी गहराई से जो कश्मीरी गज़ल है, कश्मीरी पोइट्री की बात करी, उसके ट्रेडिशन की, उसमें टाइम टू टाइम जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, रसूल मीर की बात और महजूर साहब और जो एक जितने सारे पक्ष जो शायद हमें मालूम नहीं थे, उनकी आज बहुत हम मुझे लगता है एनलाइटनमेंट हुई है हमारी। हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका। हमसे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है लाहौर से भी अमार अजीज साहब अपना सलाम भेज रहे हैं हमें, और वो खास तौर पर नुसर रहमान साहब को सलाम कर रहे हैं। उसके साथ हमारे कोलीग जो हैं वो कह रहे हैं अहमद अली साहब के दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज रखती है। Yes, so this is I think so powerful. Yes, और अब हम इस अपनी अगली मंजिल पर चलते हैं और हमारे साथ जो हैं और हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर अहमद महफूज साहब, उनका टॉपिक जो है उर्दू लव पोइट्री का है। महफूज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया है। जब भी हम बात करते हैं कि किसी से के दिल को छूना है, किसी से कोई प्यार की बात कहनी है, तो लोग कहते हैं कि कुछ गजल तो कहो। हाँ, तो आप सर, आप थोड़ा सा ज्ञान को बढ़ाइए इस मामले में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। महफूज साहब, I'm audible? आप ऑडिबल है सर। Thank you so much. मैं सबसे पहले इग्नू और इग्नू के वाइस चांसलर साहब, ख़ास तौर से ह्यूमैनिटीज़ फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और उसकी डायरेक्टर साहिबा प्रोफेसर मालती माथुर साहिबा का और सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े इवेंट में उन्होंने मुझ एक मामूली तालिब इल्म को ज़बान और अदब के इनवाइट किया। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस। यहाँ जो टाइम लिमिटेशन है, जाहिर है कि गज़ल इतना बड़ा मैदान है और इसमें इतने एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं अलग अलग ज़बानों के, और इतने एस्पेक्ट्स हैं इस जॉनर में कि अगर उस पर बहुत डिटेल में बात की जाए तो शायद 2-3 दिन भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि यहाँ ये मल्टीलिंगुअल एक तरह का इवेंट है और ये भी गज़ल की पॉपुलैरिटी को साबित करता है। तो मैं यहाँ अपनी जो गुफ्तगू है उसको मैं बस 1-2 पॉइंट्स पर ही कन्फाइन रखूँगा। ख़ास तौर से जैसा कि मेरा जो टॉपिक था कि उर्दू लव पोइट्री, और ये हम सब जानते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान में दूसरी ज़बानों में जो गज़ल पॉपुलर हुई है तो उसमें मेरा ख्याल ये है कि उर्दू गज़ल का बहुत बड़ा रोल है, बल्कि सबसे बड़ा रोल जो है वो उर्दू गज़ल का है, क्योंकि गज़ल की जो शायरी है वो हिंदुस्तान में फ़ारसी से उर्दू ही में आई पहले। हालांकि अभी कश्मीरी गज़ल के बारे में मजरूर राशि साहब ने बताया कि 18वीं सेंचुरी में वहाँ गज़ल शुरू हुई। आई एम नॉट श्योर कि वो किस तरह शुरू हुई, ज़ाहिर फ़ारसी से ही आई होगी, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि फ़ारसी से गज़ल जो है वो हमारे यहाँ उर्दू में आई, और उर्दू में इसकी पॉपुलैरिटी जो हुई और ये शायरी, मतलब शायरी के और भी जॉनर्स हैं उर्दू और फ़ारसी में, और दूसरी जॉनर्स भी उर्दू में आई फ़ारसी से, मसलन कसीदा और मसनवी और रुबाई, देयर आर अदर ऑल्सो। लेकिन गज़ल की शायरी को जो शोहरत मिली, जो इसका फैलाव हुआ और इसने जिस तरह लोगों के साथ कनेक्ट किया, वो तो बिल्कुल अनपैरेलल्ड है। अभी जो गुफ्तगू जनाब आनंद प्रकाश साहब ने की, बहुत अच्छी गुफ्तगू की इन्होंने, और एक तरह से पूरी गज़ल का जो हिस्ट्री है उसकी इवोल्यूशन है उसको उन्होंने बहुत ही
प्रिसाइजली बयान कर दिया, लेकिन उसमें एक बात मैं ज़रा सा ओनली फॉर क्लियरिफिकेशन मैं ज़रा कहना चाहता हूँ कि ये जो कहा जाता है कि गज़ल जो है वो अरबी से शुरू हुई, इट इज़ नॉट ट्रू। उसकी वजह यह है कि अरबी में, ये बिल्कुल सही कि अरबी में जो सबसे बड़ी जान थी वो कसीदा और कता कसीदा थी। तो कसीदे का जो ओपनिंग पार्ट होता था उसमें पोएट क्या करता था कि वो अपने बिल्कुल रियल जो उसके बिलवेड होते थे, यानी नाम लेकर के उनसे अपने इश्क का इजहार करता था या अपने सेपरेशन का इजहार करता था, अपनी बेकरारी और बेचैनी का इजहार करता था, बट इट वाज नॉट रिगार्डेड एज गजल। इसको तशबीब और नसीब कहते हैं अरबी में, उर्दू में भी। नसीब वो किस्मत वाला नसीब नहीं, नून सीन ये बे, नसीब। तो तशबीब और नसीब का जो पार्ट था, इसको लोगों ने ये जरूर कहा है कि एज ए जार एज सच फारसी में जो गजल हमारे यहाँ बनी, हमारे यहाँ से मुराद यानी ईरान में, उसका थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि उसका कुछ एलिमेंट्स जो है वो नसीब से उन्होंने लिए, क्योंकि वहां भी एक्सप्रेशन ऑफ लव जो था वो बहुत मेन था, ओपनिंग पार्ट ऑफ द कसीदा उसमें। इसलिए जिस गजल को आज हम लोग पढ़ते हैं या जिस गजल के बारे में हम बात कर रहे हैं एज ए फॉर्म भी, और फिर उसका जो इनर पूरा अंदरूनी जो पूरी दुनिया है गजल की, उसके थीम्स हैं, उसमें जो आइडियाज हैं, उसमें जो थॉट्स हैं, उन सारी चीजों के बारे में, ये सारी चीजें जो हैं वो पहली बार एज ए जार फारसी में इस्टेब्लिश हुई है। तो गजल का जो बिल्कुल इब्तिदा है या उसकी शुरुआत है वो अरबी से, बस अरबी से हम ये कह सकते हैं कि नसीब वाला जो हिस्सा था उसको फारसी वालों ने अपने यहाँ उसी को एक तरह से कॉन्सेप्चुअलाइज करके और फिर एक नई तरह की शायरी शुरू की फारसी में। तो इसलिए सिन्फ के लिहाज से, जानर के लिहाज से ये गजल जो है ये फारसी में इस्टेब्लिश हो गई थी, एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसा कि सब लोग कह रहे हैं और इस पर तो यानी कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि शायरी की जितनी भी विधाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर गजल है। अब गजल की पॉपुलैरिटी की एक तो वजह यह है कि भाई ये लव पोइट्री है, बहुत बड़ा हिस्सा इसका लव पर बेस्ड है, ह्यूमन लव भी है, डिवाइन लव भी है इसमें, और लव के बहुत से डायमेंशंस हैं जाहिर है। तो चूंकि ये इमोशन ऐसा है कि ये बिल्कुल यूनिवर्सल है, तो जहां भी कोई बात लव के बारे में होगी तो फौरन आदमी अपने को कनेक्ट कर लेता है उसमें कि भाई अच्छा इश्क मोहब्बत की बात है तो भाई हमारा भी कोई इश्क का जज्बा है, हमारा भी कोई एहसास है। इसलिए एक तो इसके पॉपुलर होने की एक वजह ये है। दूसरी बहुत बड़ी वजह इसकी पॉपुलैरिटी की इसके फॉर्म का मामला है कि जैसा कि आनंद साहब ने भी बयान किया और सब लोग हम जानते हैं कि अपने फॉर्म के लिहाज से गजल जो है वो यूनिक है। मेरा ख्याल है कि शायद कोई भी किसी भी जबान में पोइट्री का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा कि फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द लास्ट उसमें मालूम हुआ कि पोएम है, तो पोएम का मतलब ही है कि भाई 10 लाइन की पोएम है, 20 लाइन की पोएम है, तो उस पूरी पोएम में एक बात कही गई है ऊपर से लेके नीचे तक। लिहाजा अगर कहीं किसी पोएम को अगर हमें रिफर करना हो तो हम पूरी पोएम सुनाना पड़ता है हमें, या बहुत से बहुत उस पोएम का कोई स्टेंजा सुनाना पड़ता है। सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज मेरी क्या बीच में कट गई थी, अब आ रही है। बहुत साफ है आवाज, बहुत साफ है आवाज। शायद वो आपके उसमें वो होगा। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि गजल की जो फॉर्म है उसका जो बहुत बड़ा, इसको हालांकि कुछ लोगों ने इसको गजल की डिमेरिट कहा है, हमारे यहाँ ही उर्दू में बहुत बड़े क्रिटिक हैं, उन्होंने कहा कि साहब गजल में हर शेर अलग अलग मानी का हामिल होता है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग, तो ये गजल की खामी है। ये गजल की खामी नहीं, ये गजल की डिमेरिट नहीं, बल्कि ये गजल की बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि ये गजल ही ऐसी शायरी है कि उसमें कहीं भी आपको रिफर करना होता तो पूरी गजल नहीं सुनाते आप, सिर्फ एक शेर सुनाते हैं, सिर्फ 2 लाइन्स, क्योंकि एक ही शेर में सारी बात मुकम्मल हो जाती है। इसीलिए गजल के शेर जो है वो, मेरा ख्याल ये है कि जितनी भी शायरी है उसमें सबसे ज्यादा पोर्टेबिलिटी जो है वो गजल को है, क्योंकि एक शेर आपने कहीं भी कोई ऐसा वाकया हुआ, कोई ऐसी सिचुएशन है,
आपने गजल का कोई भी शेर सुना दिया, गालिब का, मीर का, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। अब ये ज़ौक़ की पूरी गजल है, उस गजल का ये सिर्फ एक शेर है, पहला शेर बतला तो बात पूरी हो गई। या दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। गालिब की गजल तो कई शेरों की है, उसमें से एक शेर आपने सुना दिया। जहाँ तो मेरा ख्याल ये है कि गजल की पॉपुलैरिटी में उसका जो ये फॉर्म वाला मामला है कि हर शेर बिल्कुल अपना अलग मानी रखता है और अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट होता है मानी के लिहाज से। बात पूरी हो गई, हमें दूसरा शेर या पूरी गजल सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एक तो ये बात मुझे कहनी थी कि पॉपुलैरिटी वाली बात। अब जो मेन बात मैं जरा आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, अब मेरा ख्याल है कि सब मुझसे बहुत सीनियर लोग हैं यहाँ, कि गजल के बारे में एक तो ये है उसका जो पूरा उसकी जो हिस्ट्री है उसकी तरफ बहुत अच्छा इशारा किया आनंद साहब ने। और वली जो है वो वली बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है कि वली दकनी वो पहला शख्स है, बल्कि उसको हम इस तरह से फादर ऑफ उर्दू गजल कह सकते हैं। और बिल्कुल वो पायनियर है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वली ने ही एक तरह से उर्दू गजल को इस तरह से यानी डेवलप कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया कि उर्दू गजल जो है वो फारसी गजल के मुकाबले में बिल्कुल कायम हो गई, इस्टेब्लिश हो गई। और वली ने अपनी गजलों में, अपने कई शेरों में इस बात का इजहार किया है कि हम फारसी शायरों से कम नहीं है। वरना वली के ज़माने तक, बल्कि वली के थोड़ा बाद तक, फारसी शायरी और फारसी गज़ल का इतना बड़ा बुरा माहौल था हमारे हिंदुस्तान में कि लोग यही समझते थे कि शायरी का मतलब है फारसी शायरी। अगर कोई शख्स अपने को शायर कहता था तो इसका मतलब ये होता था कि ही इज अ पोएट ऑफ पर्शियन यानी फारसी का शायर है वो। और बहुत इंटरेस्टिंग एक मिसाल आपको दूं कि मीर तकी मीर के कंटेम्प्रेरी वेरी फेमस पोएट कायम चांदपुरी, 18th सेंचुरी पोएट कायम चांदपुरी ने एक शेर कहा जिसमें यह है कि कायम में गजल तौर किया रेख्ता वरना एक बात लचर सी बज़बान दकनी थी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अर्ली 18th सेंचुरी तक गजल वर्ड से फारसी गजल मुराद लेते थे। जब गजल कहते थे तो गजल का मतलब होता है कि फारसी गजल, और उर्दू गजल को या उर्दू शायरी को रेख्ता कहते थे। कायम के इस शेर में यही कायम कह रहे हैं कि मैंने अपनी रेख्ता की शायरी को हमने क्या किया है कि गजल के बराबर कर दिया, यानी फारसी गजल के बराबर कर दिया है। कायम मैं गजल तौर किया रेख्ता वरना एक बात लचर सी बज़बान दकनी थी। यानी अभी तक तो हमारी उर्दू शायरी रेख्ता की शायरी वो बिल्कुल एब्सर्ड अटरेंस की चीज थी, बिल्कुल लचर, बिल्कुल मामूली चीज। हम इतने बड़े शायर हैं कि हमने अपनी रेख्ता की शायरी को गजल जैसी कर दिया है। गजल जैसी यानी फारसी गजल जैसी। ये मेन पॉइंट मैं जो बताना चाहूँ ये है। तो अब आप ये समझिए कि गजल की शायरी जो है वो उर्दू में जो इस्टेब्लिश हुई है तो बिल्कुल फारसी के मुकाबले में इस्टेब्लिश हुई। और फिर उर्दू शायरों में 18th सेंचुरी में मीर और सौदा और कायम में, फिर 19th सेंचुरी में आनंद साहब ने जरा नजीर अकबर आबादी को 19th सेंचुरी कहा। नजीर जो है एक्चुअली ही इज इन 18th सेंचुरी, वो मीर और सौदा की कंटेम्प्रेरी है। तो अब जो बात बताने की है, मुझे कहने की है, वो ये है कि वही होता है कि कभी कभी कोई चीज़ इतनी मशहूर, इतनी पॉपुलर हो जाती है कि उसके बारे में हम ये सोचते हैं कि अब तो इसके बारे में कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हर आदमी इसको जान रहा है, अपना उससे लुत्फ ले रहा है और मज़ा ले रहा है, गा रहा है और सुन रहा है और लुत्फ, उसको बहुत लुत्फ आ रहा है। लेकिन गज़ल का जो मामला है उसमें एकेडमिक पहलू भी बहुत अहम है। और एकेडमिक पहलू ये है कि एक तो जैसा कि हमारे अभी आनंद प्रकाश साहब ने कहा कि गज़ल में जो फॉर्म है उसकी वो बिल्कुल कन्वेंशनल है और उसमें वायलेशन हम कर ही नहीं सकते। जो उसकी राइम स्कीम है, जो उसका मेट्रिकल पूरा सिस्टम है, जिस बहर में आप चले हैं तो उसी बहर में सारे शेर होंगे, एक लाइन भी आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। राइम का जो पूरा सिस्टम है वही शुरू से लेके आखिर तक चलेगा। तो ये तो पूरा इसके फॉर्म का कन्वेंशन हुआ। लेकिन एक जो दूसरा बहुत बड़ा कन्वेंशन का मामला गजल में है वो है उसके थीम्स का और उसकी पोएटिक्स का हिस्सा। और वो ये है
और ये भी अपने आप में मेरा ख्याल ये है कि दुनिया की जाहिर सारी लव पोइट्री के बारे में तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन अंदाजा ये है कि जहां भी दुनिया में लव पोइट्री होगी, उस लव पोइट्री में ये जो फैक्टर गजल वाला है ये शायद और कहीं नहीं होगा, और वो है कन्वेंशन ऑफ लव, कन्वेंशन ऑफ थीम्स गजल के अंदर। मिसाल मैं उसकी देता हूं कि जैसे अब लव का जो मामला है, तो जाहिर बात है कि जहां भी लव होगा तो वहां एक आशिक होगा और एक माशूक होगा, एक लवर होगा और एक उसका बिलवेड होगा। एक इसी में कन्वेंशनल बात यह है कि गजल का जो बिलवेड है, माशूक जो है तो वो वुमेन, लेकिन उस अब देखिए हमारे यहाँ कन्वेंशन है कि उसको कभी भी फेमिनिन जेंडर में बयान नहीं किया जाएगा, हमेशा उसको मैस्कुलिन बयान किया जाएगा कि वो आया, वो बैठा, और वो बहुत अच्छी नहीं कहेंगे उसको। तो अब ये भी कन्वेंशनल बात है कि गजल की शायरी में है जो बिलवेड है तो वो ह्यूमन है, और वो बाकायदा लेडी है, और बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, और उसका हुस्न जो है, उसकी ब्यूटी जो है वो बिल्कुल यानी बेमिसाल है, वो सब है, और जाहिर है कि वो वुमेन है। लेकिन उसको बयान किया जाएगा गजल के शेर में पूरी फारसी में तो खैर जेंडर सिस्टम है नहीं, लेकिन उर्दू में जेंडर सिस्टम बहुत सख्त है। उर्दू में एक शेर आप क्लासिकल गजल का ऐसा नहीं दिखा सकते कि जिसमें बिलवेड को फेमिनिन बयान किया गया हो, क्योंकि ये वायलेशन हो जाएगा, गजल का जो कन्वेंशन है उसका ही वायलेशन हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो बेसिक जो मेन कैरेक्टर है लव के मामले में गजल में, आशिक और माशूक का, इन कैरेक्टर्स के भी कुछ खास इनकी कुछ सिफात है, कुछ इनकी मतलब विशेषताएं इनके साथ लगी हुई, और वो जो सिफात हैं उनमें भी वायलेशन नहीं हो सकता। मसलन गजल में बिलवेड जो है वो हमेशा क्रूएल, बेवफा, जालिम, कातिल, ये सब बयान किया जाएगा। यानी बिलवेड का जो कैरेक्टर है वो एक्टिव कैरेक्टर है, वो जिसको हम लोग अपने यहाँ उर्दू में कहते हैं कि वो उसके अंदर फाइलियत है, यानी वो हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन में होगा। और इसके बिल्कुल उल्टा जो लवर का कैरेक्टर है वो पैसिव है, यानी वो रोता रहेगा, बेकरार रहेगा, तड़पता रहेगा, कत्ल होता रहेगा, मारा जाएगा, ये सारी चीजें लवर के साथ है। कहने का मतलब ये है कि बिलवेड को कभी भी, अच्छा बिलवेड जो है वो बेवफा होगा और लवर जो है वो वफादारी करेगा, तो इसके खिलाफ आप गजल में बयान ही नहीं कर सकते। अगर इसके खिलाफ आप बयान करते हैं तो ये कहा जाएगा कि ये शेर गजल का शेर नहीं हो सकता। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। बिलवेड जो है वो हमेशा बेवफा और वादा वफा नहीं करता, वफा करने का वादा करता है लेकिन वादा वफा नहीं करता। अब अच्छा ये सब थीम्स हैं गजल के, इन्हीं थीम्स को जो हमारे शायर जो है बयान करते हैं तरह तरह से। ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, अब गालिब की मशहूर गजल है, ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, यानी यार से बिलवेड का विसाल जो है वो तो हमारी गोया वो भी कन्वेंशन में है कि विसाल पहली बात तो होता ही नहीं, अगर हुआ भी तो वो इतना लम्हाती, इतना मुख्तसर, इतनी थोड़ी देर के लिए होता है कि ना होने के बराबर। अब ये भी थीम है, ये भी कन्वेंशनल थीम है। ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, अगर और जीते रहते, यानी जितना जिए हैं इसमें तो हुआ ही नहीं, अगर 150 साल और जीते रहते तो यही इंतजार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार। यानी वही बात हुई ना कि गालिब भी देखिए, गालिब इतना बड़ा शायर है लेकिन ये लोग कन्वेंशन से बाहर नहीं जा सकते। जो मिसाल में एक और बहुत इंटरेस्टिंग मिसाल है कि बिलवेड जो है वो बेवफा होता है, वादा वफा नहीं करता। अब गालिब का शेर है कि जिद की है और बात मगर खूब बुरी नहीं, जिद की है और बात, खू के माने आदत, खसलत, हैबिट, जिद की है और बात मगर खूब बुरी नहीं, भूले से उसने सैकड़ों वादे वफा किए, भूले से। अब यहाँ जो इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है ये है कि गालिब भी ये जान रहे हैं कि माशूक जो है वो वादा वफा नहीं करता, लेकिन माशूक ने सैकड़ों वादा वफा कर दिए, तो अब उसके लिए उन्होंने शेर में रख दिया भूले से, यानी माशूक भूल गया था। तो अब आप भूले से अगर कोई काम कर दे तो कहा जाएगा कि भाई ये क्या, मैंने तो भूल से ये कर दिया, मैं ऐसा करना थोड़ी चाहता था। तो भूले से उसने सैकड़ों वादे वफा किए
क्योंकि अगर भूले से का जो फ्रेज है अगर गालिब शेर में न रखते तो ये वायलेशन हो जाता कि आप माशूक को वफादार कैसे बयान कर सकते हैं, क्योंकि कन्वेंशनली जो है माशूक तो बेवफा होता है, तो वादा वफा करता नहीं। इसी पर एक बड़ा बहुत उम्दा शेर मीर का सुन लीजिए कि उसके ईफाए अहद तक न जिए, उसके ईफाए अहद तक न जिए, उम्र ने हमसे बेवफाई की। अब जरा ये शेर देखिए, मीर कहते हैं कि माशूक जो है वो तो अहद को वादे को वफा करता नहीं, तो मीर इसमें इस थीम को इस तरह बयान कर दे रहे हैं कि भाई माशूक जो है वो हमारा माशूक वादा वफा कर देता, लेकिन ये तो हमारी उम्र ने बेवफाई कर दी कि हम मर गए, माशूक को वादा वफा करने का मौका ही नहीं मिला। देख रहे हैं आप, उसके ईफाए अहद तक यानी उसके वादा वफा करने तक हम जिए ही नहीं, उसके ईफाए अहद तक न जिए, उम्र ने हमसे बेवफाई की। यानी माशूक को बेवफा होना और माशूक के बेवफाई का एक तरह से डिफेंड कर दिया मीर ने इसमें कि भाई हमारा माशूक जो है क्या करें, अगर हम और जीते रहते, जैसे गालिब तो कह रहे हैं कि अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, यानी हम और अगर जीते 20-25 साल तब भी वादा वफा ना करता, वो वस्ल ना होता। यहाँ मीर ये कह रहे हैं कि ये उम्र ने हमारे साथ बेवफाई कर दी, माशूक वो तो वादा वफा कर देता, हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन देखिए असल बात यह है कि शेरों में जो थीम ला रहे हैं वो बेसिकली वही माशूक के बेवफाई का थीम ला रहे हैं। तो ये बात गजल की दुनिया में, और समझिए कि ये सिर्फ उर्दू की नहीं, अगर वली से हम ले लें तो वली से 200 साल बनते हैं, क्योंकि वली का इंतकाल 1707-8 में हुआ है। लेट 17th सेंचुरी यानी 1665-66 में वली की पैदाइश मानी जाती है, बहुत लंबी उम्र नहीं हुई, और 1707-8 में उनका इंतकाल हुआ है। तो अगर वली से हम ले लें तो 20th सेंचुरी के शुरू तक, जहां तक हमारी क्लासिकल गजल का पूरा दौर है, वो 200 साल बनता है। लेकिन उस 200 साल के पीछे जो रवायत फारसी की है वो कई सौ साल की है। तो कई सौ साल की फारसी की रवायत और फिर अपने 200 साल की उर्दू की रवायत मिला लीजिए तो उसमें एक शेर भी आपको कन्वेंशन के खिलाफ नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों गजलें कही गई हैं फारसी उर्दू में मिला करके। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि गजल जो है वो बेसिकली कन्वेंशनल पोइट्री है, खास तौर से लव के मामले में। गजल में जो लव है वो रियल लव नहीं है, कन्वेंशनल लव है। जैसा मैंने कहा, अब देखिए एक बात और मैं कि गजल के शेर में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमेशा लव बेस्ड, अगर वो थीम है शेर में तो फर्स्ट पर्सन हमेशा आशिक होगा। पूरी फारसी उर्दू की गजल की शायरी में एक शेर कोई दिखा देगी जिसमें बिलवेड फर्स्ट पर्सन के तौर पर आया हो, क्योंकि बिलवेड बोल ही नहीं सकता, बिलवेड नहीं बोलता। गजल की कन्वेंशन के ये खिलाफ है कि उसमें माशूक जो है बोलेगा ही नहीं, माशूक के बारे में बात होगी, माशूक को हम एड्रेस करेंगे, माशूक सेकंड पर्सन के तौर पे आएगा, लेकिन माशूक फर्स्ट पर्सन के तौर पे नहीं आ सकता। अब गालिब का शेर आप देखिए कि कहते हो ना देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया। यहां जो बोल रहा है, जो फर्स्ट पर्सन है, मुतकल्लिम जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं, वो आशिक है। आशिक अपने माशूक से कह रहा है कि तुम कहते हो कि अगर मेरा दिल कहीं पड़ा हुआ तुमको मिल गया तो तुम मुझे नहीं दोगे। कहते हो न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजिए, हमने मुद्दा पाया। आशिक कहता है कि हम तो पहले ही अपना दिल खो चुके हैं कि हमारा दिल कहीं कहीं गुम हो गया है। अब तुम ये जो बात कह रहे हो कि तुम्हारा दिल अगर कहीं हमें पड़ा हुआ मिल गया तो हम वापस नहीं देंगे, इसका मतलब मैं समझ गया कि दिल तुम्हारे पास है। तो यहां भी देखिए कि जो माशूक का जो अल्फाज हैं वो आशिक अपनी तरफ से बयान कर रहा है कि कहते हो न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया, न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया। ये वर्ड्स हैं माशूक की जबान के, लेकिन माशूक की जबान से अदा नहीं हुए हैं, ये आशिक की जबान से अदा हुए, आशिक कह रहा है। तो अब इसी तरह से जैसे ये भी कन्वेंशन है कि जैसे गजल की दुनिया में कुछ और कैरेक्टर्स हैं, यानी रकीब हैं, राइवल्स हैं। अब राइवल्स जो हैं वो हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पे गजल में बयान होते हैं। क्यों? क्योंकि राइवल्स जो हैं उनको माशूक जो है अपने करीब रखता है, और करीब इसलिए रखता है ताकि जो सच्चा आशिक है उसको तकलीफ पहुंचे।
माशूक जो है वो गजल की दुनिया में ये है थीम कि माशूक अपने आशिक को तड़पाता है, परेशान रखता है, बेकरार रखता है, और इसमें उसको लज्जत मिलती है। माशूक को, इसमें माशूक को लज्जत मिलती है, क्योंकि जितना आशिक उसका तड़पेगा माशूक को उतना ही लुत्फ आता है। तो माशूक जो है वो रकीबों को, राइवल्स को अपने पास इसलिए रखता है क्योंकि राइवल्स सच्चे आशिक नहीं है, वो तो उनके अंदर लस्ट है, वो तो बिल्कुल जैसे उस तरह के लोग होते हैं कि अपना सिर्फ ऊपर से दिल लगाया और लुत्फ लिया, उसके बाद गायब हो गए। वो जान वान देने वाले आशिक नहीं है। जान देने वाला आशिक तो सच्चा वही लवर है। तो माशूक जो है वो रकीबों को इसलिए करीब रखता है ताकि आशिक को जब ये पता चले, ये देखे कि रे साहब ये तो झूठे आशिक लोग हैं, इसके ये माशूक के पास है और हमको माशूक दूर रखता है। क्योंकि ये भी कन्वेंशन है कि माशूक जो है वो आशिक से दूर रहेगा। सेपरेशन का जो थीम है गजल में, ये बहुत बड़ा थीम है कि हिज्र की रात जो है बहुत तवील होगी, और वस्ल का दिन जो है वो, वस्ल का जो टाइम है वो बहुत थोड़ा सा होगा, और गम की मुद्दत बहुत तवील होगी, खुशी की मुद्दत बहुत कम होगी। शादियों गम में जहां की 1 से 10 का है फर्क, मीर का शेर है। शादियों गम में जहां की, शादी खुशी और गम, शादियों गम में जहां की 1 से 10 का है फर्क, 110 का है दोनों में। ईद के दिन हंसिए तो 10 दिन मुहर्रम रोइए। अब आप देखिए, ईद जो है खुशी का दिन है, और खुशी का दिन, ईद का दिन सिर्फ 1 दिन का होता है, और मुहर्रम जो है वो पहली से लेकर के 10 तारीख तक, तो मुहर्रम का गम की चीज है वो 10 दिन होती है। तो देखिए कैसे मीर ने उसको साबित किया है कि दुनिया में खुशी और गम का जो तनासुब है वो 1 और 10 का है, कि अगर खुशी 1 हिस्सा है तो गम जो है 10 गुना है उसके। और फिर उसको साबित किया कि ईद का दिन 1 और गम का दिन मुहर्रम 10 दिन। ईद के दिन हंसिए तो 10 दिन मुहर्रम रोइए। तो ये भी जाहिर थीम है। हमारी रियल दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहां तो ये भी हो सकता है कि भाई किसी के यहाँ वस्ल ही वस्ल हो, हिजर हो ही ना। बहुत से आशिक माशूक ऐसे हो सकते हैं कि उनके यहाँ कोई हिजर नहीं है, वस्ल ही वस्ल है। लेकिन गजल की दुनिया में जो कन्वेंशन है वहां यही है कि हिजर जो है हिजर ही होगा, और वस्ल अव्वल तो होगा नहीं। अगर होगा तो बहुत मामूली, बहुत थोड़े वक्त के लिए, जो ना के बराबर। तो अब अच्छा, अब जैसे एक बात और इसी सिलसिले की, कि गजल में जैसा मैंने कहा कि आशिक जो है वो बहुत ही यानी पैसिव कैरेक्टर है, बिल्कुल नाकाम, नामुराद। उसको कोई किसी चीज की वो नहीं है, ना खाने को है ना पीने को है, क्योंकि हर वक्त वो अपने माशूक के हिज्र में तड़प रहा है, मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। और माशूक जो है वो आशिक का कत्ल भी कर देता है, बल्कि आशिक जो है माशूक के हाथों मारे जाने को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट समझता है। गोया वही उसकी मेराज है कि उसका माशूक उसको कत्ल कर दे। अब इससे बढ़ के क्या चाहिए कि अपनी जान दे दे उसमें। तो आशिक का जो कत्ल है या आशिक का मरना जो है, ये तो गजल के थीम्स में, गजल की दुनिया में बहुत बड़ा थीम है, बहुत कॉमन थीम है। लेकिन माशूक का कत्ल होना, फिर वही बात, पूरी गजल की रवायत में एक शेर ऐसा नहीं दिखाया जा सकता कि जिसमें माशूक या बिलवेड का कत्ल हुआ हो। क्यों? क्योंकि ये भी कन्वेंशन के खिलाफ है। माशूक का कत्ल तो बहुत दूर की बात है, माशूक को रोते धोते हुए भी गजल में बयान नहीं किया जा सकता कि माशूक रो रहा है, जबकि जाहिर कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान वो भी है, उसके साथ भी तो ये सब होता होगा कि भाई परेशानी, मुसीबत कुछ। लेकिन गजल की दुनिया में ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि माशूक को परेशान दिखाया जाए, या माशूक रो रहा है, माशूक तड़प रहा है, माशूक बेचारा, ये मतलब वो बेचारा हो ही नहीं सकता। बेचारगी की सारी जो सिफत है वो आशिक के साथ होगी। तो ये जो गजल की दुनिया में जो कन्वेंशन है, इन कन्वेंशंस को अगर हम गजल की रीडिंग में अगर न सामने रखें तो फिर बहुत से शेरों को समझने में, या उसका सही इवेल्युएशन करने में, या उसकी तफहीम में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में हमें बड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। जैसे अब एक मिसाल और आपको देते हैं। गजल की दुनिया जो है वो हमारी दुनिया ही की तरह एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, एक ख्याली दुनिया है, वहां पर सब ऐसे ही होता है। लेकिन हमारी दुनिया की तरह से हर चीज वहां नहीं है, इससे कुछ अलग भी है।
जैसा मैंने अभी कहा कि हमारी दुनिया में माशूक जो है वो उसका भी कत्ल हो जाता है, बहुत से आशिक जो है अपने माशूक को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। हम लोग अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पे सुनते हैं कि साहब जो जिससे मोहब्बत कर रहे हैं तो उसी को मार दिया। लेकिन गजल की दुनिया में ये नहीं हो सकता कि माशूक को मार दिया जाए। इसी तरह से जैसे गजल की दुनिया में ये है कि जो माशूक है, जो बिलवेड है, उसका वो एक तरह से वो कुफ्र, काफिर है। काफिर क्यों है? क्योंकि उसको बुत कहा जाता है। बुत यानी जो आइडल है, आइडल हमेशा बहुत खूबसूरत होता है, बुत बहुत हसीन होता है, और चूंकि माशूक भी बहुत हसीन है इसलिए माशूक को बुत कह देते हैं। बुत और सनम, तो सनम जो है जाहिर, बुत और सनम जो है स्टैचू के मानी में है, आइडल के मानी में है। अब जाहिर है कि बुत और सनम है, तो बुत और सनम कहाँ की चीज है? ये जाहिर है कि बुत खाने की चीज है, जो सनम खाना है जहाँ बहुत बुत है, और वो कुफ्र का पूरा है मैदान है। अब उसके साथ साथ फिर कौन लोग हैं? वो ईमान वाले लोग हैं, इस्लाम वाले लोग हैं। तो उसमें कौन है कि भाई वाइस साहब हैं, शेख साहब हैं, नासे हैं। ये वो लोग हैं कि ये कहते हैं कि अरे साहब ये इश्क मोहब्बत बहुत खराब चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, इससे दूर रहो, और ये सब क्या है, ये कुफ्र और हसीन और बुतखाना, ये सब ये तो बहुत गुनाह की चीज़, मना करते रहते हैं। तो अब देखिए गजल की दुनिया में कन्वेंशन ये है कि ये वाइज और नासे और शेख साहब जो क्रिटिसाइज करते रहते हैं या प्रीचिंग करते रहते हैं नमाज रोजा करने की, इनको गजल की दुनिया में हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर बयान किया जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक शेर आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि जिसमें शेख, वाइज और नासे को बहुत ही अच्छे इंसान के तौर पे गजल की दुनिया में बयान किया गया हो गजल के शेर। जबकि जैसा कि हम कहते हैं कि भाई हमारी दुनिया में ठीक है, बहुत से वाइज नासे बड़े दुनियादार लोग होते हैं, ऊपर से बड़े नमाज रोजा करते हैं, लेकिन अंदर से बड़े दुनियादार लोग होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे भाई बहुत ही धोखेबाज भी है मौलाना साहब है। लेकिन हमारी रियल दुनिया में ऐसा थोड़ी है कि सारे वाइज जो है वो सब ऐसे धोखेबाज होते हो, सारे शेख साहब। लेकिन गजल की दुनिया में जो कैरेक्टर है शेख का या वाइज का या नासे का, वो हमेशा इसी तरह बयान किया जाता है कि साहब वो दिखावे में, देखने में, दिखाने में तो बहुत अपने को बड़े दाढ़ी और ये और नमाज और रोजा और अल्लाह रसूल करते रहते हैं, लेकिन उनके दिल में सारी दुनिया की बुराइयां भरी हुई है। वो बहुत ही यानी दुनियादार लोग। अब गालिब या किसी भी शायर के यहाँ जिस शेर में भी आपको शेख और वाइज और नासे का जिक्र मिलेगा, हमेशा निगेटिव मिलेगा। कहाँ मैखाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, कहाँ मैखाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। अभी मैखाने में तो हम तो जाते, यहाँ जो आशिक है वो कह रहा है कि हम तो खुले हुए मैखाने वाले आदमी, हम तो शराब पीते हैं, माशूक के साथ बैठ के शराब पीते हैं, साकी माशूक शराब पिलाता है और हम उसके साथ पी रहे हैं, हमको क्या है, हम तो सारी दुनिया में, हम चाहे बदनाम हो चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे बारे में सब जानते हैं कि भाई हम मैखाने के आदमी हैं। लेकिन ये वाइस साहब जो है तो सारी दुनिया में कहते फिरते हैं कि अरे भाई मैखाने से दूर रहो, शराब मत पियो, लेकिन साहब कल मैंने देखा कि कल तो हम मैखाने से निकल रहे थे और ये मैखाने में जा रहे थे। तो ये जरा देखिए इनकी दुनियादारी। बड़ा बड़ा दिलचस्प शेर है कि महफिले वाज तो तादेर रहेगी कायम। अनीसुर रहमान साहब कायम चांदपुरी का शेर है, महफिले वाज तो तादेर रहेगी कायम, यह है मैखाना अभी पी के चले आते हैं, यह है मैखाना अभी पी के चले आते हैं। अरे भाई यहाँ सब चलिए अल्लाह रसूल की बातें हो रही, वाज की बातें हो रही हैं सब, लेकिन ये मैखाना करीबी है, चलिए भाई साहब उठ के चल के पी के आ जाते हैं इतनी देर में। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो है वो गजल में इस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन के तौर पर है। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि आनंद प्रकाश साहब ने बिल्कुल सही कहा कि गजल की फॉर्म जो है वो तो इस्टेब्लिश्ड है ही है, उसमें भी कोई वायलेशन हम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ नए जमाने में अभी 20th सेंचुरी में अभी 30-40 साल पहले आजाद गजल के नाम पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कुछ लोगों ने किया, बल्कि हमारे उर्दू के बड़े मशहूर शायर मजहर इमाम साहब, उन्होंने आजाद गजल में उन्होंने ये किया कि एक लाइन छोटी, दूसरी लाइन बड़ी, फिर तीसरी लाइन फिर छोटी, फिर चौथी लाइन बड़ी, और राइम स्कीम वही रखी। लेकिन वो नहीं चल पाई, क्योंकि गजल जो है जिस तरह की शायरी है वो इस तरह का वायलेशन बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो एक तो फॉर्म का जो इस्टेब्लिश्ड पूरा कन्वेंशन है कि आप बिल्कुल वही रहेगा, उसमें आप जरा बराबर फर्क नहीं कर सकते। शायर जो है वो एक्सपेरिमेंट करता किसमें है? मेटाफर्स में, जो डिक्शन है, जो सिमिलीज है, जो इमेजरीज है,
इनमें वो नई नई चीजें लाता है, नए नए मेटाफर्स लाता है, नई नई तशबीहें लाता है, इमेजेस लाता है, लेकिन जो उसका पूरा फॉर्म है। और दूसरी चीज जो मैंने अर्ज किया, भाई वक्त अगर हो गया हो तो मैं थोड़ा सा कंक्लूड करेगा सर। जी बस आखिरी बात। तो आखिरी बात वही है कि जो गजल के अंदर की जो दुनिया है, वो दुनिया भी अपने आप में बिल्कुल यूनिक दुनिया है। और उसका मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया की और तरह की लव पोएट्री में शायद इस तरह का कन्वेंशन नहीं होगा कि हर चीज जो है वो बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है, आप उससे आप इधर उधर नहीं हो सकते, आप उससे इनहराफ नहीं कर सकते। यू कांट वायलेट दीज इस्टेब्लिश्ड conventional things in ghazal. That's all what I wanted to make. थैंक Thank यू। you so much. शुक्रिया महफूज साहब, बहुत आपने एक गजल की बात कहते हुए थोड़ा आपका अंदाज और आपकी बातें बहुत गजल जैसी लग रही थी। बहुत आपने जो पॉपुलैरिटी की बात करी है और गजल की यूनिकनेस की बात करी है, कंप्लीटनेस की बात करी है, ये बड़ी हमारे जहन में और हमारे तसव्वुर में रहेंगी बहुत दिनों तक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है सर। हम आपका जो गजल की रिवायत के बारे में हम इसको आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच। और अब ये जो दास्तान है वो आगे चलती रहेगी। हमारे जो अगले स्पीकर हैं वो भी पंजाबी लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर की बहुत सेवा करते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं और वो पंजाबी गजल की बात करेंगे आज हमसे। प्रोफेसर जसविंदर सिंह सैनी साहब। जसविंदर जी, हम आपको जी आए नू कहना चाहते हैंगे ते तुसी आओ ते जो बेसिक नेचर और डेवलपमेंट की बात है गजल के दुनिया में, उसकी आप हमें थोड़ा सा ज्ञान दीजिए सर प्लीज। प्रोफेसर जसविंदर सिंह सैनी प्लीज। थैंक यू सर। मेरी हेलो, मुझे थोड़ी आवाज कम आ रही है सर। सर अब देखना हेलो, अभी है सर थोड़ा सा एक सर प्लीज कंटिन्यू। अब बेहतर है सर, अब बेहतर। जसविंदर जी कुछ बोलिए। आप जी बोलिए प्लीज। आवाज कट रही है शायद, है ना? वो उनकी आवाज आ नहीं रही अभी। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका जी और सबका। क्या आप सुन पा? थोड़ी कट रही है आवाज। मैं कोशिश कर। बाकी सबको क्लियर सुनाई दे रहा है क्या जसविंदर जी का? नहीं ना? नहीं, इधर भी इश्यूज है मैडम। इधर तरफ भी नहीं आ रही है, आवाज कट रही है। अच्छा, ये जसविंदर जी शायद वापस जुड़ेंगे, वापस जुड़ रहे हैं शायद। म्यूट है सर, म्यूट अनम्यूट करिए सर एक बार। जी अब ठीक है सर? अब बेहतर है सर, सही है, सही है। जी सर, जी सबसे पहले मैं इग्नू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का धन्यवाद करता हूं और डॉक्टर मालती माथुर का। मेरी पंजाबी ऐसी है
मेरे पंजाब में वैसे तो जहाँ न्यूज चैनल और दूसरे चैनल होते हैं उर्दू और हिंदी में, लेकिन हमें बोलने का अभ्यास कम होता है क्योंकि 10वीं तक हम हिंदी पढ़ते हैं। तो मेरी जो पंजाबी है उसमें मेरा एक्सेंट शामिल रहेगा। तो मेरा जो फोकस है, जो मैं पेपर लिखा है, वो पंजाबी गजलें, मूल प्रकृति और उसका विकास, उस पे लिखा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं जो प्रवास में गजल लिखी जा रही उसका भी जिक्र करूंगा, जो पाकिस्तान में गजल लिखी जा रही उसका जिक्र करूंगा। तो जो हमारे जो औरत या नारी गजलकारा हैं उनका भी जिक्र करूंगा, और गजल में जो मीटर जहाँ की बर्त होती है उसका भी जिक्र करूंगा। तो ऐसे मैंने एक डिजाइन किया पेपर, तो आपके पास आपके साथ आपके लिए पेश करता हूँ। गजल का समुचा इतिहास इसमें शामिल है। हो सकता है कोई क्योंकि मुझे मन का अभ्यास नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ आप मुझे समझ पाएंगे। इस उम्मीद से मैं पेपर शुरू करता हूँ आपको अपना। पंजाबी में गजलें 17वीं सदी से लिखी जा रही है। पहले पंजाबी गजल लेखक शाह मुराद हैं, जिनकी मृत्यु 1702 ईस्वी में थी। जो लेखक गजलें उर्दू से पहले भी पंजाबी में लिखी जाती थी, लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में उर्दू गजलों में जो परिपक्वता और कोमलता आई, वह उस समय पंजाबी गजल में नहीं थी। उर्दू गजल की तरह पंजाबी गजल में निरंतरता की भी कमी थी। शाह मुराद ने उर्दू में 14 उर्दू के साथ साथ पंजाबी में 14 गजलें लिखी। उनकी गजलों में जीवन के सारे रंग हैं। महबूब की खूबसूरती, जुदाई, बेचैनी, रहस्यवादी, तेवर, नैतिकता आदि उनकी पंजाबी गजलों को एक अलग रंग देते हैं। मैं एक नमूना आपका पेश करता हूं उनका, शाह मुराद जी का, तो आप समझ पाएंगे। तुझ जेहा ना जमाने सारे या तुझ जेहा ना जमाने सारे यारा अजब तू, वेखन आए सूरज तारे यारा अजब तू, हरगिज ना गुमान करिए डरिए रब अपने थी, सब जो बिके बाजारे जारा अजब तू। ये शाह मुराद रंग था जो पहले हमारे गजलकार थे। शाह मुराद के बाद पंजाबी गजलें शायद अनेक पुस्तकों में पाई जाती हैं, जैसे किस्सा लिखा गया है जहाँ हमारे, तो कुछ जिसमें उर्दू के साथ पंजाबी गजलें थी। तो कुछ नाम हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। सआदत यार खां रंगीन थे, मोहम्मद बख्श थे, किशन सिंगार थे, अजहर पेरा निवासी थे, मिल्खी राम लाहौरी थे। तो ये कुछ गजलकार जो हमारे 47 से पहले गजल जिन्होंने लिखी। तो इस अवधि के दौरान पंजाबी गजलों का पहला संग्रह जो 1947 से पहले छपता, मौला बख्श कुश्ता का दीवाने कुश्ता है, जो 1903 में छपता है। इस दीवान में 139 पंजाबी गजलें हैं। इस दीवान में पहली बार तगजुल, जिसको आप गजलियत कहते हैं, के रंग ने पंजाबी गजल को और निखारा है। इसमें सभी शामिल हैं जो प्रेम, रहस्यवाद, नैतिकता, देशभक्ति और तत्कालिक समस्याओं को व्यक्त करते हैं। पंजाबी शायरी में शमा, कासद, कातल, परवाना, साकी आदि प्रतीकों को पहली बार कोश्ता जी ही पंजाबी में लेके आए। दीवे और बम्बट जिसे उसकी तो हमारे पास का नहीं। तो कोश्ता जी की एक तो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तैनू तरसन आया सजन दुखियां दे कलापे ते, तैनू तरसन आया सजन दुखियां दे कलापे ते, रही सराने साडे रोंदी सारी सारी रहन शमा। तो 1947 तो
पंजाबी गजल उसमें परंपरा और औद्योगिकता का संगम दिखता है हमें। इसमें एक और जहाँ पारंपरिक विचार अपना रंग और गहराते हैं, वहीं दूसरी ओर जीवन के आधुनिक मुद्दे भी गजलों का विषय बनते हैं। इस काल में गजलों का सिलसिला, इस तरह की मिक्स किस्म की गजलों का सिलसिला जारी रहता है। इस काल में पुस्तकों के साथ सबसे अधिक गजल लिखे गए इस काल उन साढ़े के बीच शिव कुमार गोविंद नाम है जो संदेश की पंजाबी भाषा में गजल कही जा सकती है या नहीं, इस मुद्दे पर छिड़ती है। पंजाबी गजल के अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। इस तनावपूर्ण माहौल में पंजाब में गजल आंदोलन चल पड़ता है। पंजाबी में कई गजल मास्टर्स गजल स्कूल खोलते हैं जिसमें बाकायदा उस्ताद और शागिर्दी की परंपरा शुरू करते हैं। गजल आंदोलन अरूज की बंदिश में पंजाबी में गजल लिखने की परंपरा स्थापित करते हैं। इसके विपरीत अधिकांश गजलकार जो इस परंपरा से बेरुख भी होते हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र रूप में गजल लिखते हैं। तो ये मेरे प्रभाव गजल में आते हैं। इसके साथ ही गजल में प्रगतिशील, सामुदायिक और नक्सली आंदोलन से प्रभावित पंजाबी गजल भी लिखी जाती है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। कोई गया हवा बन के, कोई चो लंघिया हवा बन के, असी रह गए बिरख वाली हाँ बन के। हाँ, इसी तरह डॉक्टर जगतार दी एक गजल है, हर मोड़ ते सलीबा हर मोड़ ते हनेरा, हर मोड़ ते सलीबा हर मोड़ ते हनेरा, असी रुके ना साडा भी देख जेरा। पंजाब 20वीं सदी के 8वें और 9वें दशक में पंजाब समस्या का समा जहां रहा, आप जानते हैं सभी। इस बीच इस क्षेत्र में सिख रहा था। पंजाब के लोग एक तरफ अलगाववादियों की गोलियों और दूसरी तरफ सीआरपीएफ और पुलिस की ज्यादतियों का शिकार हो जाते हैं। पंजाब में सरकारी मशीनरी थम कर रह जाती है। पूरा वातावरण आतंक, भय, नरसंहार, लाचारी, अस्तित्वीय तनाव से गदला हो जाता है। गजल समान जीवन की करंट बातों का जवाब नहीं देती। वैसे अक्सर होता है कि गजल एकदम इमीडिएट कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, लेकिन पंजाब के इस माहौल में भी गजलें चिन्हों और इशारों, प्रतीकों के माध्यम से वर्तमान सत्य की कई अहम और सूक्ष्म जो परतें हैं उसको प्रकट करती है। एक शेर में पेश करता हूँ, आप इसका रंग देखिए। कोई दस्तार रत लिबड़ी कोई तलवार आई है, कोई दस्तार रत लिबड़ी कोई तलवार आई है, लियाओ चुक अखबार आई है। ये माहौल था तब जब पंजाब एक बड़े अजीब किस्म के दौर से गुजर रहा था। 1991 से अब तक पंजाबी गजल वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश करती है। दुनिया की अन्य भाषाओं की इस नए प्रवेश में पंजाबी गजल का नए प्रवेश का पंजाबी गजल पर भी प्रभाव पड़ता है। निजीकरण, वैश्वीकरण की ये नीतियां नव पूंजीवादी व्यवस्था की पहचान है, जिसका प्रभाव पंजाबी गजल के साथ साथ साहित्य की अन्य विधाओं पड़ रहा है, जिसमें राज्य और व्यक्ति के बीच तनाव है। ये सबसे बड़ा मसला है। राज्य, स्टेट और व्यक्ति के बीच में जो तनाव है वो गजल का भी हासिल बनता है। दिल्ली की सीमा पर किसान मोर्चा इसका प्रमाण है या था।
अपनी सीमाओं के कारण पंजाबी गजल की प्रकृति शुरू से नावर है। आपकी गजल में, पंजाबी गजल में एक बहुत खूबसूरत बात है कि वो डिसिडेंस है, नावर है, स्टेट के खिलाफ, किसी भी बंधे बनाए सिस्टम के खिलाफ हमेशा ही नावर रहती है। पंजाबी गजल की जो बात है, कुछ आपको और इरा के जाने और ही जेकर ही रूहां तेहां दे रिश्ते ही मुख जाणगे, रूहां तेहां दे रिश्ते ही मुख जाणगे। पहला नदियां दी चिंता सी हुण जापदा है, पहला नदियां दी चिंता सी हुण जापदा, इत्थे मुख जाणगे। तो ये हालात ने जो पंजाब के मौजूदा हालात ने। अब तक पंजाबी में 17 से अधिक पुस्तकें और लगभग 2000 गजल लिख चुके हैं या लिख रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी पंजाबी और प्रवासी पंजाब में भी गजल जा रहे हैं। 250 से करीब पश्चिमी पंजाब और इतने ही प्रवासी पंजाब में गजल की सिर्जना कर रहे हैं। पंजाब के विभाजन के बाद, अब मैं पाकिस्तानी पंजाबी गजल की बात करता हूँ पहले, वो भी हमारा हिस्सा बड़ा क्षेत्र है। पंड के बाद पाकिस्तान गया, हम कभी उस पंजाबी अपने आप को महसूस करते, उनकी गजल को हम अपने एक संयुक्त गजल कार्य में शामिल करते हैं, हमेशा ही शामिल करते हैं। तो पंजाब के विभाजन के बाद पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब अस्तित्व में आए। दोनों पंजाबों में विभाजन की त्रासदी, निराशा, आबादी का विस्थापन, सपनों का टूटना, दुख दर्द, उदासी आदि दोनों पंजाबों ने समान रूप में सहन किया है। पश्चिमी पंजाब में गजलें अभी सीमित हद तक लिखी गई हैं। अन्य लिखी जा रही अधिकांश गजलें परंपरागत रंग की है। पश्चिमी पंजाब ने अपना अधिकांश समय खाकी वर्दी के साये में बिताया है, इसलिए इस क्षेत्र की गजल में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। पाकिस्तानी गजल की पहचान का आधार लुक में बिंब प्रतीकों की बरतों है, भाषा का स्थानक प्रयोग है, छोटी बहर है, देसी छंदों की बरतों है, माहौल में भी इस गजल का हासिल है। समकाल में लिखी जा रही पाकिस्तानी पंजाबी गजल विच कभी कभी आधुनिकता और गजलियत का रंग भी उगड़ता दिखता है। कुछ के साथ लिखी जाती है, बहुत ज्यादा गजल शाहमुखी से पंजाबी में अनुवाद होके हमारे पास पहुंच रही है। तो हम अपनी क्लासों में भी शाहमुखी स्क्रिप्ट पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि वो पाकिस्तान के लिटरेचर को और वहाँ के साहित्य को समझ सकें। तो कुछ शेर पेश है पाकिस्तानी पंजाबी गजल के। तो पहला है उस्ताद दामन का, आप सभी जानते हैं उनका नाम। इन्हां आजादियां हथों बर्बाद होना, होए तुसी भी हो होए असी भी हाँ। इन्हां आजादियां हथों बर्बाद होना, होए तुसी भी हो होए असी भी हाँ। लाली अखियां दी पई दसदी है, लाली अखियां दी पई दसदी है, रोए तुसी भी हो रोए असी भी हाँ। 47 ਦੀ ਬਣਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ जी ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਨੇ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ, ਮਰ ਗਿਆ ਤਨਵੀਰ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ, ਮਰ ਗਿਆ ਤਨਵੀਰ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰੀ ਮੇਰਾ ਆਲ ਦੁਆਲਾ ਇੰਜ ਦੇ ਸਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰੀ ਮੇਰਾ ਆਲ ਦੁਆਲਾ ਇੰਜ ਦੇ ਸਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੂ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੂ ਆਵੇ। ਜਾਂ ਜਫਰ ਇਕਬਾਲ ਲਿਖਦੇ, ਕਲਮ ਕਲਾ ਮੈਂ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸਾਂ, ਕਲਮ ਕਲਾ ਜ਼ਫਰ ਮੈਂ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਪਾਰ ਦੇ। ਇਸ ਪਾਰ ਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਫਰ ਇਕਬਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਏ ਜਾਂ ਮੱਕਾ ਏ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਸਰ, ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ।
गंगाए जा मक्काए सिद्धा तक्का, गंगाए जा मक्काए सिद्धा सिद्धा तक्का है। रब नूं लभदे फिरदे हो, रब किसे दा सक्का है। रब नूं लभदे फिरदे हो, रब किसे दा सक्का है। तो ये पाकिस्तानी गजल का एक रंग सिगा जो मैं आपके सामने पेश किया। तो एक पंजाब प्रवास में भी बसता है हमारा पंजाब। तो 150 मुल्क हैं और 150 मुल्कों में पंजाबी मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादा प्रवास में जो गजल लिखी जा रही है वो इंग्लैंड में है, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका जिसे हम कनाडा और अमेरिका कहते हैं, इटली में है ना, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में गजल लिखी जा रही है। लेकिन जो वहाँ लिखी जा रही गजल इस समय जो पंजाब में गजल लिखी जा रही है उसका ही प्रभाव है उस पर। लेकिन कहीं कहीं वहाँ की मज़हबकशी, वहाँ के दृश्य, वहाँ के तनाव उस गजल में कभी कभी पेश होते हैं। तो हमें वहाँ की गजल से ये तवक्को तो नहीं करनी चाहिए कि वो वहाँ का स्किल है उसके बारे में हमें बताएं, जरूरी ऐसे लिखें कुछ। लेकिन जो पंजाबी हैं उनका वहाँ के भाईचारे से कोई इतना नहीं है, तो इसलिए पंजाब में पूर्वी पंजाब जी है, लेकिन कभी कभी वहाँ देश उनकी एक है मन क्यों ना तो मैं क्यों बोट दी शां भाल क्यों जला जला पाल क्यों जन गुरु नानक के ठगियां रूह थ्रू रंग इस्लामिया मेरा मौसम रात तन्हा दिन उदास, जर्द चेहरे खुश्क मौसम रात तन्हा दिन उदास, किए बसी तेरियां तेरियां हरफन आ सके की रस। तो पंजाबी में नारी गजल 3 पंजाबों में लिखी जाती है। लगभग 100 महिलाएं पंजाबी में गजल लिख रही है। गजल का है महिला के पंजाबी गजल में कहीं भी महिलाओं के साथ है, इस महिलाओं के कम के बाद जिसमें एक महिला के जीवन के मुद्दे के पेश। There is some technical issue there, I think. Professor Seni, are you there with us? Sir, unmute करेंगे एक बार please. His voice keeps breaking. और conclude करेंगे सर प्लीज, थोड़ा सा समय हो रहा है सर प्लीज. प्रोफेसर सैनी प्लीज conclude. प्लीज अनम्यूट कर लें सैनी साहब, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए. पंजाबी में लिखी जा रही है, पश्चिमी पंजाब, तो बहुत अच्छी गजल लिखी जाती है, खास करके औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू थे, उनके जी जान के मसले जो पहली बार हमारे साथ हमारे एक गजल के
मैं अपनी बात करूंगा। लंगर रोज दरे कल को अपना एक गजल में गलती नहीं, पहली गलती सारी गलती मेरी नहीं, जिक्र मेरी लिए एक बेटी है कि मैं तेरी, तो मैं कंक्लूड कर रहे हैं। तो पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ रिकॉर्डिंग रही है, लेकिन बहुत ही ਜਿਹੜੇ वो भी जो है शामिल 65 से दिक्कत ये है कि पंजाबी लेकिन हमें अपने आप खूब लेकिन रह जाए। थैंक यू प्रोफेसर सैनी। आपकी बात बीच में कट रही थी, पर एक बात बिल्कुल साफ है कि आपने जिस बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से जो पंजाबी गज़ल की जो एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में जो पक्ष बताए हैं वो हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता थे, तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। हम आपसे ऐसे ही कोलैबोरेट करेंगे आगे भी। जो सेंटर फॉर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है वो आप जैसे एक्सपर्ट्स के कारण ही अपनी जो है जो अपने सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पूरा करेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं बीच बीच में, हमारे बहुत सारे जो है लोग जुड़े हुए हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अब जो है हमारे नेक्स्ट जो स्पीकर हैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं बहुत लव एंड रिस्पेक्ट के साथ। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं। उन्होंने संस्कृत की जो है जो भाषा साहित्य और संस्कृति की बहुत सेवा करी है। तो त्रिपाठी, वी आर सो ऑनर्ड टू हैव यू फॉर दिस प्रोग्राम। आप जो बात करेंगे वो होगी संस्कृत गजल इन 20th and 21st century। Professor Tripathi, over to you, please. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, प्लीज आ रही है। जी सर, बहुत जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ सेंटर फॉर स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस IGNOU के लिए, और ऑर्गेनाइजर्स हैं प्रोफेसर मालती माथुर, उनके लिए कि मुझे मौका दिया आपने संस्कृत में गज़ल पर बात करने का। नागेश्वर राव जी हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं और उनकी लीडरशिप में बहुत सी अच्छी बातें हुई IGNOU में, उनकी भी मैं सराहना करता हूँ। संस्कृत में गज़ल लिखी जा रही है, उसके बारे में बात करने के पहले मैं 2-3 बातें बता देना चाहता, साफ कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि संस्कृत में 19th, 20th और 21st सेंचुरीज में बहुत साहित्य लिखा गया है, लिखा जा रहा है लगातार, और बहुत सारे लोग हमारे इवन जो साहित्य के विभागों में, लैंग्वेजेस के विभागों में हैं, उनको जानकारी उसकी नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट था संस्कृत के बारे में कि वो पंडितों पुरोहितों की कर्मकांड की भाषा है या वेद पुराणों की भाषा है, और वो 1000 साल 1500 साल पहले मर गई थी। ये झूठ उन्होंने इस तरह से फैलाया और हमारे दिमागों में भरा, और हमारा सारा एजुकेशनल सिस्टम, पूरी पद्धतियां इस तरह से बनाई गई
कि इवन जो हमारे संस्कृत के जो प्रोफेसर्स थे वो भी यही मानते थे कि संस्कृत में नया तो 1000 साल से बहुत हुआ नहीं है, और जो पुराना है वही हमको पढ़ाना है। ये एक मिथ था, ये हम लोगों ने तोड़ा पिछले 30-40 साल में, और हमने देखा कि संस्कृत में अपार साहित्य लिखा गया। मेरी बिब्लियोग्राफी ऑफ मॉडर्न संस्कृत राइटिंग्स है, उसमें 5000 एंट्रीज हैं, जो केवल लाइब्रेरीज में जो मुझे किताबें छपी हुई नए साहित्य की मिली उनके बेसिस पर बनाई गई है। उससे 3-4 गुना साहित्य होगा 20वीं सेंचुरी का संस्कृत में। तो मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि 19th और 20th सेंचुरी में जितना लिटरेचर संस्कृत में लिखा गया उसको आप एक तराजू के पलड़े पर रखें, और ठीक है 5000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना ऋग्वेद से लगाकर साहित्य है संस्कृत में, उसको आप दूसरे पलड़े पर रखें तो क्वांटिटी के मामले में शायद ये 19th-20th सेंचुरी वाला पलड़ा ज्यादा भारी होगा, क्योंकि क्वांटिटी में, क्वांटम में बहुत ज्यादा है जितना साहित्य लिखा गया। और अंग्रेजों ने उसको दबाकर इसलिए रखा गया कि अंग्रेजों के खिलाफ ही कविताएं लिखी जा रही थी संस्कृत में, पत्रिकाएं खूब छप रही थी, क्रांति पर बातें की जा रही थी। तो वो उसको पूरा किस तरह से मार्जिनलाइज किया जाता है, पूरी एक बड़ी ट्रेडिशन को, उसका ये जो कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है संस्कृत के बारे में, उसका बेहतरीन नमूना है। और उसको हमने आजादी के बाद खूब पोसा, उसको हमने खूब अच्छी तरह से पाला पोसा है, जो मिथ संस्कृत के बारे में था, क्योंकि इसमें सबका इंटरेस्ट था कि उसको पूजा पाठ की भाषा बना करके रखो ताकि उस पर थोड़ी श्रद्धांजलि हम चढ़ाते रहेंगे, और उसमें जो कुछ नया हो सकता है उसको दरकिनार किया जाता रहे। हालांकि दरकिनार नहीं किया जा सकता आपको, क्योंकि हम लोग तो लिख रहे हैं, मैं तो खुद संस्कृत में लिखता हूँ, मेरी 25 ओरिजिनल राइटिंग की किताबें हैं संस्कृत में, गजलें भी मैंने लिखी हैं, मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है संस्कृत पोएट्री पर, मॉडर्न संस्कृत पोएट्री पर, और कई लोग हैं ऐसे, हर साल साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है, नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स का संस्कृत का, उसमें बहुत सारे अच्छे कवियों को अवार्ड संस्कृत के मिलता ही है। एक बात यह थी। दूसरी बात यह थी कि संस्कृत में एपिक्स लिखे जाते रहे 19th-20th सेंचुरी में, ड्रामा खूब लिखा गया, और नए जॉनर्स बहुत आए, नई विधाएं बहुत सारी आई, उसमें गजल भी आई। और हमारे किसी मित्र ने, शायद प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी ने बताया कि सोनेट में और गजल में कुछ करीबी है, तो सोनेट भी लिखे गए संस्कृत में, और अच्छे सोनेट लिखे गए, मैंने भी सोनेट लिखे हैं संस्कृत में। तो एक ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात, शायद आप उससे एग्री ना करें, और करें तो अच्छा है, ना करें तो मैं तो ये उछालूंगा ही कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उनमें शायद 2-1 अपवादों को छोड़ करके, हो सकता है कश्मीरी और उर्दू और भी हो सकता है पंजाबी, इनको छोड़ दें तो बढ़िया मुकम्मल गजल अगर किसी भाषा में बनती है, बनी है और बन सकती है, तो वो संस्कृत है। उसकी मेरे पास वजहें हैं। उसकी एक तो वजह यह है कि फारसी और संस्कृत में इंटरेक्शन की हिस्ट्री है 1500 साल पुरानी कम से कम, कि पंचतंत्र का अनुवाद पहलवी में होता है, फिर फारसी में होता है, पुरानी फारसी में होता है, फारसी का लिटरेचर भी संस्कृत में तर्जुमा होता है। ये तो बहुत दबाया गया इस बात को कि फारसी का यूसुफ जुलेखा 15th सेंचुरी में संस्कृत में बढ़िया उसका तर्जुमा पंडित कर रहे हैं, फारसी सीख रहे हैं, फारसी और संस्कृत के कोश लिखे जा रहे हैं, अकबर के 3-4 कोश, डिक्शनरीज बनाई गई जब फारसी कोर्ट की भाषा हो गई मुगल पीरियड में। तो फारसी और संस्कृत का लेन देन बहुत हुआ 1500 साल पहले की हमारी हिस्ट्री में, और मुगल पीरियड में बहुत ज्यादा हुआ। इसको शायद हमारे किसी सम्मानीय वक्ता ने बताया भी कि फारसी का एक्सचेंज जो है इंडियन लैंग्वेजेस से, और जब ये खुसरो आए उस समय बहुत ज्यादा हुआ। एक वजह ये है कि फारसी की करीबी की वजह से, उर्दू के तो इतना करीब नहीं संस्कृत आई, फारसी के छंद संस्कृत में आए, फारसी के लिटरेरी जॉनर संस्कृत में आए, और एक बड़ी वजह यह है जो कि किसी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में अब नहीं है, कि संस्कृत के जो पारंपरिक छंद हैं, करीब 300-400 छंद संस्कृत के जो बहुत ट्रेडिशनल छंद थे, कालिदास के जमाने में जैसे वसंत तिलका, शार्दुल विक्रीडित, मंदाक्रांता में हम लोग उस समय पोएट्री लिखी जाती थी, अभी भी वैसी उन छंदों में लिखी जाती है, थीम्स नई आ गई, ब्लैंक वर्स में भी लिखी जाती है, लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल मीटर्स थे
उनमें बराबर क्रिएटिविटी संस्कृत में, क्योंकि हमारे खून में रमे हुए हैं, वो हमारे निकलते हैं वैसी ही जुबान से, उनकी रिदम, उनके रिदमिक पैटर्न्स हमारे भीतर ऐसे रम जाते हैं जब हम पढ़ते हैं अपने क्लासिक्स को, तो उनमें क्रिएटिविटी बराबर हमारे यहाँ होती रही। उनमें से बहुत सारे छंद ऐसे हैं जो फारसी की जो गजल की बहरें हैं उनके बहुत करीब हैं, लगभग करीब करीब वही स्ट्रक्चर उसका बनता है, केवल पढ़त की जो पद्धति है, जो पढ़त का तरीका है थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि फारसी में, उर्दू में जो गजल पढ़ी जाती है उसमें जो, जिसको हम दीर्घ कहते हैं, उसको हर बार आप दीर्घ की तरह से नहीं प्रोनाउंस करते, उसको छोटे अक्षर की तरह प्रोनाउंस करते हैं। ये उदाहरण देने का मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन संस्कृत में तो जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा, और दीर्घ या गुरु जिसको कहते हैं छंद में, तो उसका प्रोनाउंसिएशन गुरु ही होगा। तो स्ट्रक्चर वही है जो फारसी की बहरों का है, लेकिन पढ़त का जो तरीका है, उस छंद की रिदमिक पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन बहुत सारे हमारे पंडितों ने इस बात को समझा कि गजल का जो फॉर्मेट है वो तो हमारे छंदों के बहुत करीब है, तो गजल उन्होंने फिर उसी तरह से लिखी, और स्ट्रक्चर पूरा आएगा कि काफिया है, रदीफ है, मक्ता है, मतला है, पूरा जो गजल के स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ पक्की गजलें लिखी गई। केवल ये है कि गजल के जो कन्वेंशंस बताए गए, हमारे किसी दोस्त ने बताए, शायद अहमद साहब ने, कि वो माशूक की बेवफाई ही होगी और वाइज की और उसकी मुल्लाओं की वही होगी, उनको डिक्राई ही किया जाएगा। ये कुछ संस्कृत में ऐसा नहीं है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत आया होगा प्रेमिका की के विश्वासघात पर, लेकिन वो नहीं लिया गया। और जहाँ तक मैं सुन सका, मैंने बहुत थोड़ा ही सुना, जो पंजाबी पर बोल रहे थे, तो मेरे ख्याल में पंजाबी में भी कोई ऐसा कन्वेंशन पूरी तरह से माना गया हो। वो क्यों मानेंगे हमें आज़ादी इतनी होनी चाहिए कि हम फॉर्मेट हमने लिया, और वो हमारे लिए फॉरेन फॉर्मेट है ही नहीं, वो तो हमारा अपना हो गया। इतनी ज्यादा करीबी थी कि हमारे यहाँ तो पंडित लोग कहने लगे कि ये फारसी में गए हैं संस्कृत के छंद, हालांकि ऐसा नहीं है। वो फारसी की अपनी ट्रेडिशन है, उन बहरों की और परंपरा की, वो करीब बहुत आ गए एक दूसरे के, और नजदीकियां उनमें थी, वो बात अलग है। तो इतनी सारी कुछ जनरल बातें मुझे करना थी। उसके बाद मैं कुछ संस्कृत गजल के बारे में कहूँगा, और बहुत बड़ा है, इसको इस पर 1.5-2 घंटे इत्मीनान से बात की जा सकती है। और कल मैं इत्तेफाक से, चूंकि ऑनलाइन लेक्चर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मुझसे एक लेक्चर कल देने के लिए बोला गया है दूसरी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने विषय पूछा कि मॉडर्न संस्कृत राइटिंग पर कुछ बता दीजिए, तो इसकी तैयारी में कुछ नोट्स बना ही रहा था, तो मैंने उनको यही सब्जेक्ट बता दिया है। तो अगर किसी साहबान को बहुत दिलचस्पी हो, सुनना चाहते हो, तो कल मैं बोलूँगा, मैं संस्कृत में बोलूँगा, वो संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए है, और संस्कृत में गज़ल पर ही बोलूँगा। यहाँ टाइम बहुत कम है। मेरे पास करीब 30 नाम है संस्कृत में जिन्होंने गज़ल लिखी है, और ये 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर से करीब शुरू हो जाती है संस्कृत में गज़ल। उसके पहले अगर लिखी गई है तो हमें जानकारी नहीं है, हो सकता है कि लिखी गई हो, क्योंकि फारसी पोएट्री का कुछ असर संस्कृत की नई पोएट्री पर आ रहा था शाहजहां के ज़माने में, ख़ास तौर से कि पंडित राज जगन्नाथ बहुत बड़े पोएट थे, वो अपनी सेंचुरी के सबसे बड़े पोएट हैं संस्कृत के। उनको तो जो लोग मानते हैं कि संस्कृत मर गई थी, वो भी मानते हैं कि पंडित राज जगन्नाथ तो ही इज द लास्ट ग्रेट स्टलवार्ट। वो हमारे शेल्डन पोलक भी लिखते हैं, एज ए पोएट एंड एज ए थिंकर उनको मानना पड़ता है, इतना बड़ा थिंकर, इतना प्रतिभाशाली कवि हुआ। तो वो चूंकि मुगल शाहजहां की कोर्ट में हैं, शाहजहां उनकी बहुत कद्र करते थे, दारा शुकोह को पढ़ाते, शुकोह को वो पढ़ाते थे, वेदांत वगैरह खूब पढ़ा दारा शुकोह ने पंडितों से, तो इनमें इंटरेक्शन तो हुआ। तो उनकी पोएट्री पर कहीं कहीं जो नज़ाकत है, और शाहजादे कबूतरों को पकड़ रहे हैं, इसका उन्होंने अपने बढ़िया मुक्तक में वर्णन किया है। तो फारसी पोएट्री की नज़ाकत और कुछ उसका एनवायरनमेंट आया संस्कृत में, तो हो सकता है कि लिखी भी गई हो गज़ल, लेकिन वो बची नहीं है। और जो 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर से गज़लें हमको कुछ मिलने लगती हैं, उसमें 2 लोगों ने गज़ल लिखी थी, वो हिंदी के लॉरिएट्स रहे हैं बेसिकली। एक तो प्रताप नारायण मिश्र थे, तो हिंदी के कोई हैं यहाँ प्रोफेसर तो जानते होंगे, प्रताप नारायण मिश्र 19th सेंचुरी के हिंदी वर्ल्ड में एक अच्छा बड़ा नाम है। उन्होंने संस्कृत में गज़ल लिखी थी, वो एक ही गज़ल उनकी मिलती है। और दूसरे भारतेंदु, जो कि बड़े युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं हिंदी के,
उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी हैं और बहुत सारे हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकारों ने संस्कृत में कविताएं लिखी हैं, ये भी बात बताई नहीं जाती है, और अच्छी कविताएं लिखी हैं 19th सेंचुरी में खास तौर से। तो ये भारतेंदु ने भी गजलें लिखी, लेकिन वो इक्की दुक्की गजलें हैं, तो उनको मैं गिनता नहीं हूँ संस्कृत के गजलकारों में। वो उनका मन हुआ, तबीयत हुई, तो उन्होंने एक आध संस्कृत में भी लिख दी। पंडित अच्छे थे संस्कृत के, प्रताप नारायण मिश्र भी और भारतेंदु भी। जो बढ़िया गजल की शुरुआत हुई, जिसका नमूना हमको मिलने लगता है, वो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री से मिलता है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जयपुर में रहते थे, वहीं पर संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर थे। ये बहुत बड़ा नाम है। जो मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर की हिस्ट्री हम लोग पढ़ाते हैं, मैंने खुद लिखी है, मेरा 4 वॉल्यूम्स में बहुत मोटा संस्कृत साहित्य का इतिहास है। उसमें चौथा जो आखिरी वॉल्यूम है वो मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर पर है। तो उसमें हम लोग एक इरा पूरा मानते हैं, एक पूरा युग जो है 20th सेंचुरी के शुरू का, वो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का इरा है। तो उन्होंने गजल भी लिखी संस्कृत में। उन्होंने बहुत सारे नए जॉनर्स इंट्रोड्यूस किए, रेडियो प्ले उन्होंने लिखे, फाइन ऐसे उन्होंने लिखे। बड़े आथर थे ये, और बड़ी रिच इनकी पोएट्री भी है। एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने खूब किए, और ट्रेडिशनलिस्ट भी उतने ही हैं, कन्वेंशनलिस्ट भी उतने ही हैं, लेकिन उसमें थीम्स नहीं लाते हैं और नए जमाने के बारे में लिखते हैं। तो इन्होंने जो गजलें लिखी थी उनका संकलन 1929 में छपा था, गीति वाणी, लेकिन वो बदकिस्मती से वो किताब मिलती नहीं है। और मैं वाइस चांसलर था, दिल्ली में ही आपके यूनिवर्सिटी है, वो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहलाती थी उस समय, और अब सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी कहलाती है। तो उसमें 5 साल में वाइस चांसलर रहा। तो मैंने कोशिश की कि जो हमारे बड़े स्टलवार्ट्स हैं 19th-20th सेंचुरी के, उनकी हम लोग कंप्लीट राइटिंग्स छापेंगे। तो 4 बड़े बड़े वॉल्यूम्स में हमने भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की संस्कृत राइटिंग्स छापी हैं। वो आपको अभी भी मिल सकती हूँ, तो 1911-12 में छपे हैं 4 वॉल्यूम्स। तो उसका जो सेकंड वॉल्यूम है वो इनकी ज़्यादातर लिरिक पोएट्री, लिरिक तो नहीं हम लोग कहते हैं उसको, और मुक्तक और खंड काव्य और जो भी छोटी छोटी कविताएं हैं वो उनके सेकंड वॉल्यूम में है। सेकंड वॉल्यूम भी 450 पेज का करीब है। इसमें पूरा सेक्शन उर्दू के फॉर्मेट को लेकर के जो गजलें लिखी गई हैं उसका है। लेकिन ये गीति वाणी जो इनकी गजलों का संग्रह था 1929 में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का, वो उसमें उसकी सारी गजलें नहीं आ पाई इसमें, और इसमें शायद 19 गजलें कुल हैं जो ये किताब हम लोगों ने छापी उसमें। और उससे हमको नमूना कम से कम चलता है पता कि अर्ली 20th सेंचुरी में 1905 के आसपास भट्ट मथुरानाथ शास्त्री किस तरह का संस्कृत में लिख रहे थे। एक बात ये जरूर है कि जितने भी आथर्स के नाम मैं ले रहा हूँ, अधिकांश तो एकेडमी अवार्ड ही हैं उनमें, और बड़े आथर्स हैं, उनमें से कोई एक्सक्लूसिवली गजलकार नहीं है संस्कृत का। ऐसा कोई आथर नहीं हुआ जिसने कि सिर्फ गजलें ही लिखी हों, और ऐसा हो भी नहीं सकता था। तो गजल जो है संस्कृत में प्रोमिनेंट फॉर्म नहीं हो सकता था, जैसा कि हमारे शायद कश्मीरी के बारे में बताया, और उर्दू और फारसी में हो सकता है कि वो इट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स। संस्कृत में नहीं हुआ और नहीं हो सकता था, लेकिन हम लोगों की दिलचस्पी हुई और तबीयत हुई और मजा उसमें आया, तो हम लोगों ने गजलें भी लिखी और रुबाइयाँ भी लिखी संस्कृत में। और वो करीबी है भाषाओं की, और संस्कृत के पंडितों में ट्रेडिशन रही है, फारसी उर्दू भी जानते हैं, तो उसकी जो ट्रेडिशन रही है उसकी वजह से ये संभव हो सका। तो अब मैं कुछ 2-4 उदाहरण पढ़ूंगा, बहुत सारे उदाहरण हैं, और कुछ गजलें जो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की हैं वो तो ईश्वर के लिए हैं, कुछ अपने आप को संबोधित करते हुए हैं, कुछ माशूक जिसको प्रेमिका है उसके लिए भी हैं। तो ये वैरायटी उनमें है, और ऐसा कोई कन्वेंशन तो वो नहीं मानते हैं कि माशूक की बेवफाई पर ही गजल होनी चाहिए। तो एक ये जो बहर फारसी की, उन्होंने कितनी अच्छी तरह से समझा था फारसी की गजल को। तो जब गजल वो लिखते हैं तो फारसी में जो बहर है उसका स्ट्रक्चर भी बताते हैं, फिर संस्कृत में जो उसकी वजन का छंद है उसको बताते हैं, और कैसे संस्कृत के छंद में उतरती है। तो ये बहर जो फारसी में शायद है वो हजज मुसद्दस महफूज मफाइलुन फौलून ऐसा कुछ है, और इस पर उन्होंने गजल लिखी है। संस्कृत का जो उसका करीबी छंद है
उसकी पढ़त अलग हो जाएगी। आप जो उस बहर को जैसा आप पढ़ते हैं वैसा हम नहीं पढ़ेंगे उसको। अहो कम वा श्रेयम दीन बंधो स्वदुखम कम वदेयम दीन बंधो, ये इस तरह से उसको फिर पढ़ा जाएगा, चाहे गाएं आप चाहे पढ़ें। और बहरे रमल मुसम्मन महफूज ऐसा कुछ नाम है, फाइलुन। हाँ। तो ये इसके वजन पर उन्होंने गजल लिखी है। हे गणे गुणा वधे करुणा निधे यवधीयताम, इस तरह की है। और कुछ जिनमें कि एकदम संस्कृत का बढ़िया छंद बनता है, उनमें गजलें हम लोग अभी भी लिखते हैं। जैसे पंचचामर छंद बहुत प्रसिद्ध है, जो संस्कृत से थोड़े करीब रहे हो जानते होंगे। रावण का शिव तांडव स्तोत्र उस छंद में है कि बहरे हजज मुसम्मन मकूज, ये छंद इसमें फारसी में बनता है उससे, उसी वजन का। मफाइलुन 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 मफाइलुन, ये जो है, जो जटा कटा संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी, ये इस तरह से पढ़ा जाता है उसको। तो दया तवेह मामये मुकुंद नंद ये नकिम पदारविंद मेत कन मनो मिलिंद ये नकिम, इस तरह से इसको पेश किया जाएगा। तो ये बहरे अजज मुसम्मन मकबूज की वजन पर उन्होंने गजलें इस तरह की कुछ लिखी हैं। एक बढ़िया छंद हमारे यहाँ तोटक छंद कहलाता है, उसमें अच्छी क्लासिकल पोएट्री भी लिखी गई है। वो गजल में अच्छा रमता है वो जो छंद है, तो उसको बहरे तवील कहते हैं शायद। वो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी फारसी की ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बहरे मुतारिक मकबून मुजाइफ उसको कहा गया। और फ़ैलुन 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 फ़ैलुन, ऐसा कुछ उसका हर बंद का स्ट्रक्चर चलता है। तो ये इस पर उन्होंने अच्छी गजलें, इस पर गजलें और भी लोगों ने लिखी हैं। तो ऐ चित्त चिरेण विचिन्तयतोपि चंचलता न गता, इस तरह से ये चलेगा। और अपने मन को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि तू कितना शरीर है, तू कितना शातिर है, तू नहीं बंध पाया, तेरी चंचलता न गई। अपि नाम निरंतर यत्न शतैस्तव निष्ठुरता न गता, मैं बहुत कोशिश तेरे को बांधने की करता रहा, लेकिन तेरी निठुराई न गई। इस तरह से ये चलती है। तो ये भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने प्रेमिका के लिए भी कुछ गजलें लिखी हैं, हर तरह की थीम्स पर उन्होंने गजलें लिखी हैं। आपको न मानना हो तो न मत मानिए कि गजल वो हुई कि ना हुई, लेकिन हमारे हिसाब से बढ़िया गजल हुई। हम लोग खुश हैं कि संस्कृत में गजल खूब फल फूल रही है। और दूसरे बड़े गजलकार, बहुत बड़े गजलकार जो संस्कृत में हुए, वो 20वीं सेंचुरी के सबसे बड़े पंडितों में भी माने जाते हैं और बड़े कवियों में। वो साहित्य अकादमी अवार्ड भी उनको संस्कृत पोएट्री के लिए मिला। बहुत बाद में उनको जाना गया असल में, तो बाद में उनकी रचनाएं छप करके आई। 2005 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड उनकी जो एंथोलॉजी थी संस्कृत कविता की, उस पर मिला। उन्होंने बढ़िया गजलें लिखी हैं। और भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के बाद कैसे आप देखिए कि जो सेंटिमेंटलिटीज हैं, जो संवेदनाएं हैं और जो भावबोध है वो बदलता है संस्कृत पोएट्री में भी और संस्कृत गजल में। तो ये स्रग्विणी छंद इसको हम लोग कहते हैं। इसमें कविताएं खूब लिखी जाती हैं संस्कृत में, राजभा राजभा राजभा, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर चलता है। तो फारसी में भी इस तरह का है। तो ये स्रग्विणी में उनकी गजल, जैसे मैं कुछ लाइनें पढ़ रहा हूँ। प्रेम गीतम बलात् गीयते करहिचित रुद्ध कंठेन वाष्पार्ध द्रक पक्ष्मणा, प्रेम गीतम बलात् गीयते करहिचित। इश्क का गाना, प्रेम गीत इश्क का गाना जबरदस्ती गवाया जा रहा है, गला रुंध रहा है, आंखों में आंसू भर आ रहे हैं, फिर भी प्रेम गीत जबरदस्ती गवाया जा रहा है। क्षिप्त वाचा स्मितापेक्ष काव्यम हृदा वज्र सारेण निर्मीयते करहिचित। तो इसमें करहिचित ये चलेगा इसका काफिया, और गीयते निर्मीयते इस तरह से चलेगा रदीफ या जो भी होता हो। तो ये अद्भुत इसका बंध है पूरा। और जो पूरा एक मॉडर्न आथर का अनुभव है कि इश्क करना, अब वो जमाना नहीं रहा इश्क मजाजी वगैरह वगैरह का। और ये जो इन्वायरमेंट है इसमें हम किस तरह से जी रहे हैं, तो कलेजे पर पत्थर रख करके फिर भी हम कह रहे हैं बात इसको। आगे बढ़िया इमेजेस है, जो कहा गया कि इमेजरी नई बनाती है गजल जो है। तो कौसुमोद्यान संभार संभ्राजिते भूमि भागे निदागे न शोषम गते,
कंटकई राचितम नागफण्यावनम प्राप्य सौंदर्य द्रग दीयते करीचित। कैक्टस के जंगल में मुझे छोड़ दिया गया और उसमें मैं अपने एस्थेटिक्स की से भरी हुई नजर कुछ डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ वो कहते हैं। तो ये जटिल जो पूरी कॉम्प्लेक्सिटी है मॉडर्न लाइफ की, उसके साथ गजल हमारे कुछ कवियों ने लिखी। उसमें बच्चूलाल अवस्थी बड़े कवि हैं, और ऐसा नहीं है कि जो क्लासिक्स हैं उनसे इमेजरी नहीं ली हो, कालिदास से बहुत सारी बढ़िया इमेजरी वो बुनते हैं। पिका मौनम भजेरन मासी वासंते कथंकारम शरह शाकुंतला सिद्धे न दुष्यंते कथंकारम। तो इसमें वासंते कथंकारम, दुष्यंते कथंकारम, इस तरह से तो रदीफ काफिया चलता है, ये मतला है। और आप देखेंगे कि वसंत में कोयल न कूजे, ऐसा कैसे हो सकेगा। दुष्यंत सामने आ जाए और शकुंतला उस पर अपने आंखों के बाण न छोड़े, ऐसा कैसे हो सकेगा। इस तरह से गजल फिर चलती है। और जो गजल में होता है कि हर उसका जो बंद है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो क्लासिक्स से इमेजरी ले ली है कुछ, और कुछ एकदम मॉडर्न इन्वायरमेंट से इमेजरी ली है। तो इस तरह से इसके बंद, ये लंबी उनकी बहर है, ये चलती है। और जो पूरे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं हमारी एज के, उसको अवस्थी जी उतारते हैं अपनी गजलों में। मनुष्यस्यांतरो व्याधिर बहिर्भेषज विज्ञानम पटः किम तंतुभि सिद्धेन इतस्तानस्ततो वानम। तो इसमें वो कहते हैं कि बीमारी भीतर है और इलाज खोजा जा रहा है बाहर। कपड़ा कैसे बुना जाएगा धागों से, जबकि इधर ताना हो उधर बाना हो। तो इतस्तानस ततो वानम, इसमें ये वानम से जो बनता है वो चलता है पूरा उसमें। बिना रागम बिना तालम हतम वाद्यम दुतम गानम, राग नहीं, कोई बहर नहीं, छंद नहीं, ताल नहीं, तो फिर भी गाना जो है उसमें मरता जा रहा है, ऐसा कुछ वो कहते हैं। और कहीं कहीं बहुत सरकास्टिक होते हैं, बहुत कटु होकर के वो लिखते हैं। तो बिलम गलस्य गर्दभस्य गर्दनेन वर्धते, गधा जो है उसका जो गला है वो रेखने से साफ होता है। जरद गवस्य विक्रमो अति नर्दनेन वर्धते, जो बूढ़ा बैल है वो जितनी जोर से डकारता है उसकी ताकत उससे बढ़ती है। इससे ये एक व्यंग्य में पूरी गजल वर्धते वर्धते के द्वारा चलती है। दूसरा बहुत बड़ा अगला नाम जो है, जब बंद करना हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि 25 एक नाम है, एक एक के बारे में दो चार बात कहूंगा। प्लीज कंक्लूड करिएगा। आप जब बोलेंगे मैं बंद कर दूंगा। हाँ सर, हाँ कह दीजिएगा आप प्रमोद जी। 2 मिनट और सर प्लीज, आप कंक्लूड कर दीजिए। परेशान होने की बात नहीं है, आप लोग भी ज्यादा परेशान मत होइए। और जब टाइम होगा तो मैं बंद कर ही दूंगा। मेरे ख्याल में अभी 15 मिनट हुए होंगे। तो ये दूसरा बड़ा नाम जगन्नाथ पाठक का है। ये बहुत यशस्वी कवि हैं संस्कृत के, और ये भी साहित्य अकादमी अवार्डी हैं। इनके बहुत सारे काव्य संग्रह छपे, और बहुत कम कवि ऐसे हुए जिन्होंने केवल अपनी संस्कृत गजलों का ही अलग से संस्कृत संग्रह छापा हो। उसमें अभिराज राजेंद्र मिश्र हैं, वो भी बड़े कवि हैं। उनकी 3-4 एंथोलॉजी ऐसी हैं जो केवल संस्कृत गजलों की ही हैं। बाकी जितने पोएट्स हैं वो अपने काव्य संग्रह छापते हैं, उसमें किसी में 10-15, किसी में 20-25, किसी में 5-10, इस तरह से उनकी गजलें भी हैं। अलग अलग तरह के रंगत की कविताएं वो उसमें शामिल करते हैं। तो जगन्नाथ पाठक की बहुत सारी एंथोलॉजीज छपी हुई हैं, 7-8 उनकी। और उसमें कापिशाइनी शराब को कहते हैं, मृद्विका अंगूर की शराब को कहते हैं, पिपासा प्यास को कहते हैं। इस शीर्षकों से उनकी 3 एंथोलॉजी शुरू में छपी थी 1980 से 1987 के बीच में, और बाद में उनकी 4-5 और एंथोलॉजीज आई हैं संस्कृत कविता की। उनमें सभी में गजलें हैं, अच्छी खूबसूरत गजलें हैं। उमर खयाम का इन पर बहुत असर रहा। मधुशाला की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा आती है। मधुबाला मधुशाला की इमेज इनकी पोएट्री में भी आती है, गजलों में भी आती है। और इंतजार के कई सारे डायमेंशंस हैं। प्रतीक्षा, आगतो द्वारी कश्चिदेव स्यात्, यत् प्रतीक्षास्ति ते स एव स्यात्। शायद दरवाजे पर आ गया होगा कोई, जिसका इंतजार है वो आ गया होगा कोई, ऐसा कुछ वो कहते हैं इस गजल में। और किम तुम मदंती के येषु ते ही नो दिवसागता। अब ये देखिए कि ये लाइन जो है उन्होंने पुरानी क्लासिकल पोएट्री से ले ली है, ते ही नो दिवसागता, भवभूति की पोएट्री से, और इस पर पूरी फिर वो गजल लिखते हैं।
तो तम मदंति के येषु तेहिनो दिवसागता किम प्रतीक्षया तेषाम तेहिनो दिवसागता। तुम मेरे पास होते थे जब वो दिन बीत गए, और अब उनका इंतजार करने से क्या वो दिन बीत गए। इस तरह से पूरी गजल ये चलती है। एक नाम जो मैंने लिया वो अभिराज राजेंद्र मिश्र का है। वो प्रोलिफिक आथर हैं, उनकी 50 किताबें ओरिजिनल संस्कृत राइटिंग की छपी हुई हैं। और मधुपर्णी उनकी केवल गजलों का संग्रह है। मतवारणी, शाल भंजिका और हवीरधानी ये उनकी गजलों के ही संस्कृत गजलों के संग्रह हैं। और बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने गजलें लिखी हैं, और बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक भी वो होते हैं। बहुत गहरी वेदना, यंत्रणा, अपना टॉर्मेंट जिसको कहते हैं, टॉर्मेंटेड सोल एक तरह से उनकी सामने आती है अपनी गजलों में। और जो इंटरनल लैंडस्केप है और जो एक्सटर्नल लैंडस्केप है, अंतर यात्रा और बहिर यात्रा, दोनों के वे कवि हैं। भीतर की जो वेदना है उसको भी वो दिखाते हैं, बाहर जो हो रहा है पॉलिटिकल बहुत सारे उनके मायने उनकी गजलों में आते हैं। कटाक्ष वो करते हैं जो इस समय जो पूरा सिनारियो है उस पर। तो ये बड़ा एक तरह से लैंडस्केप खुलता है संस्कृत गजल का राजेंद्र मिश्र की गजलों में। तो मणिकर्णिका घट्टे दिष्ट्या स्थितोहम सत्यादृते सर्वै स्निग्धैश्च्युतोहम। मैं मणिकर्णिका के घाट पर खड़ा हुआ, अपने सत्य को छोड़कर बाकी सब से जुदा किया गया, ऐसा कुछ वो कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा वेदना वाली उनकी गजलें हैं। और जो बाहर हो रहा है दुनिया में उस पर भी बहुत उन्होंने सेटायरिकल होकर के लिखा है। तो मेरा ख्याल है कि मैं ज्यादा आपको परेशान न करूं। एक मिनट का समय हो तो मैं कहूंगा कि अब कुछ तोड़फोड़ जरूर की गई बाद में। हमारे यहाँ बहुत एक्सपेरिमेंटेशनल पोएट्री लिखी गई और जबरदस्त एक्सपेरिमेंट्स हुए। शायद अगर आप उसको देखें तो लगेगा कि जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं संस्कृत पोएट्री में उतने शायद और किसी लैंग्वेज में उतने ना हुए हों। कि सररिलियस्ट पोएट्री है, मोनो इमेज पोएम्स हैं। तो गजल तो ये हर्षदेव माधव बहुत बड़े एक्सपेरिमेंटल पोएट हैं, उन्होंने लिखी। और ट्रेडिशनल फॉर्मेट में भी गजल उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने बाद में बहुत तोड़फोड़ भी की और उस पर काफी विवाद भी हुआ। जो हमारे बीच थोड़े कन्वेंशनलिस्ट थे उन्होंने कहा कि गजल में ये सब नहीं हो सकता है, और उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ, उस पर कंट्रोवर्सी होती रहेगी। उन्होंने एक गजल जो है सेरोगेट मदर पर लिखी है, और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया गजल है। और गजल का फॉर्मेट तो उसमें थोड़ा टूटता है। नास्ति वात्सल्यम ही माता त्वम नसा मूर्ति रूपा किंतु श्रद्धा त्वम नसा। तेरे भीतर कोई अफेक्शन वात्सल्य नहीं है, तू वो माता नहीं, मूर्तिमयी श्रद्धा तू नहीं हो सकती है, तो पूजा नहीं हो सकती है। इस तरह से ये गजल चलती है, सिरोगेट मदर को एड्रेस्ड है। तो ये एकदम नई थीम्स पर और थोड़ा सा फॉर्मेट बदल करके भी गजलें लिखी गई। अब मैं एक बात केवल यही कहना चाहता हूँ कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो कि 1889 में पैदा हुए, और जो बच्चूलाल अवस्थी जो कि 1918 में पैदा हुए थे। ये बच्चूलाल अवस्थी तो 5-6 साल पहले तक जिंदा थे। हम लोगों ने उनके मुंह से उनकी गजलें संस्कृत में सुनी। जगन्नाथ पाठक की गजलें उनकी मुंह से हमने सुनी। उनकी पीढ़ी से लगा करके जो सबसे नई पीढ़ी है वो ऋषिराज जानी, उनकी उम्र 25-26 साल है। उनको युवा साहित्यकार संस्कृत के लिए जो साहित्य अकेडमी का अवार्ड है वो मिला हुआ है। उन्होंने भी एकदम नई तर्ज की गजलें संस्कृत में लिखी हैं। तो इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैंने शायद वक्त ज्यादा ले लिया है, मैं बहुत अफसोस मुझे है इस बात का। बहुत सारे बहुत बढ़िया नाम छूट गए हैं, और जो गजल की बहुत अच्छी पकड़ रखने वाले थे हमारे बीच, राजदीन पांडे हैं और प्रवीण पंड्या हैं। इन पर मैं कभी आगे मैं बात करता रहा हूँ इन पर, मैंने खूब लिखा भी है, बोलता भी रहा हूँ। बलराम शुक्ल बहुत बड़ा नाम है, आपके दिल्ली में ही रहते हैं, आप उनको बुला के सुनिए। फारसी के बहुत बड़े कवि हैं, उनको तो ईरान गवर्नमेंट ने अपना नेशनल अवार्ड दिया है फारसी पोएट्री के लिए। वो संस्कृत में रीडर हैं संस्कृत विभाग में, वो फारसी संस्कृत दोनों में वो बढ़िया कविता लिखते हैं और गजल भी लिखते हैं। अब ज्यादा मैं तकलीफ आपको नहीं दूंगा, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने मुझे वक्त दिया, सुना। और मिसेस माथुर को बहुत शक था कि संस्कृत में भी क्या लिखी जा रही है, तो मैंने कहा हाँ लिखी जा रही है। तो शायद धीरे धीरे लोग माने कि हाँ मुकम्मल गजल, नई अच्छी पोएट्री संस्कृत में संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
हमें कोई परेशानी नहीं है, पर सर जो आपने जिस मुझे लगता है बिंदुवार तरीके से बहुत गहरी बातें करी हैं सर, और मुझे ये जो आपने कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट की बात करी सर, ये जो मुझे लगा ये अब जो हमारे पास जो ऑनरेबल वाइस चांसलर और हमारी जो डायरेक्टर मैडम है, हमारे पास 7 नए लोग आए हैं सर, 7 नई फैकल्टी आई है। ये हिस्ट्री की बात होगी सर, जिस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एमए सब तरह से प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो अब जो संस्कृत के बारे में जो भी मिथ्या भाव हैं, जो भी नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं, वो टूटने वाले हैं सर। हाँ, तो और हम, मुझे लगता है हम अपने आंखों के सामने वो होता हुआ देख रहे हैं सर। ये बहुत, ये अब तो और भी कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट्स बहुत हैं, वो सब धीरे धीरे टूटेंगे सर। और आपकी जो लीडरशिप है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं सर। आप ऐसे ही, मुझे लगता है आपने 30 नामों की बात करी, और भी हम एक डेडिकेटेड लेक्चर करेंगे सर। ये जो सेंटर ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का जो पूरी संकल्पना है, वो इसी को सोच के करी गई है सर। थैंक यू वेरी मच सर, और वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, थैंक यू। और अब हम जो है, और हमारे एक और डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर हैं जो कि बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ हिंदी गजल। वो भी एक हमारी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज का परिवार ही हैं, डॉक्टर श्री माधव कौशिक जी हैं। हमेशा वो, हम उनसे एक बार फोन करते हैं, कोई भी हेल्प लेनी होती है, कोई भी गाइडेंस, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं सर। हमें बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है सर आप लोग, आपके साथ। कौशिक साहब, प्लीज आप जो एवोल्यूशन ऑफ हिंदी गजल की जो बात करेंगे सर, आप हमारा इस पे ज्ञान बढ़ाइए सर, प्लीज। थैंक यू। माधव जी, एक बार अनम्यूट करेंगे प्लीज। अभी अनम्यूट नहीं हुआ सर। माधव जी, आपका अनम्यूट नहीं हुआ अभी, आप म्यूटेड ही हैं। हेलो, आवाज आई अब? जी जी, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। मैं दरअसल पटना की एक मीटिंग में हूँ, और सर्किट हाउस में यहाँ मुझे लगता है बहुत कम वो आते हैं, तो शायद आवाज बीच में कटे तो मुझे माफ भी करेंगे आप। और वास्तव में राधा वल्लभ जी को सुना, पूरा तो मैं नहीं सुन पाया, बीच में मीटिंग छोड़ के कुछ थोड़ा अवकाश मैंने निकाला। पहले तो पूरे संस्थान को, इग्नू को इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने गजल पे एक तरह से पूरे हिंदुस्तान का एक परिदृश्य सामने रखा। ये बहुत अच्छी बात भी है और बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि जिन विधाओं पे कम बात हुई है वो थोड़ी सी जितना हमारा समाज संकीर्ण है, उसी अनुपात में हमारी साहित्यिक संकीर्णता भी है। तो उस संकीर्णता की वजह से कुछ एक चीजें हम पीछे छोड़ते चले गए हैं, उनका मूल्यांकन पूरी तरह नहीं हुआ। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो बातें हो चुकी हैं उनको ना दोहराया जाए और आगे से बात की जाए। सच बात तो ये है कि हमें बहुत देर बाद ये समझ आया कि विधाएं साहित्य की होती है, भाषा की नहीं होती। हम हमेशा ये मान के चलते रहे कि गजल तो उर्दू की विधा है, वो दूसरी भाषाओं में नहीं आ सकती, हिंदी में नहीं आ सकती, प्रांतीय भाषाओं में नहीं आ सकती। ये एक तरह संकीर्णता का भाव था। अब वो संकीर्णता के भाव धीरे धीरे समय ने समाप्त कर दिए हैं, और अब पूरे साहित्यिक समाज को भी ये समझ आ गया कि विधाएं एक तरह से पूरी दुनिया की होती हैं, यूनिवर्सल होती हैं, किसी एक भाषा का उस पर एकाधिकार नहीं मान सकते। हमारी जितनी गद्य विधाएं हैं सारे यूरोप से आए हैं। हमारे पास उपन्यास भी नहीं था, कहानी भी नहीं थी, निबंध भी नहीं था। तो इस गजल के साथ बड़ी अजीब सी स्थितियां हुई है, यहाँ तक कि उर्दू वालों ने भी एक तरह से, एक ऐसा वक्त था जब गजल को हाशिए पे धकेलने की कोशिश की। जब प्रगतिशील मूवमेंट आया तो उन्होंने कहना शुरू किया, भाई ये तो सामंतवाद से जुड़ी हुई है, इसमें आप पूरी बात नहीं कह सकते।
समाज का पूरा सत्य नहीं आ सकता, समाज की जो संवेदनाएं हैं, जो उसके सरोकार हैं, उसके लिए ये विधा नहीं है। लेकिन ये धीरे धीरे वक्त ने इन सब बातों को निर्मूल साबित कर दिया। और अंशुर रहमान साहब जैसे बैठे हैं, बात करने को मन भी कर रहा है, अभिवादन भी करने को दिल करता है। तो अगर हिंदी की विकास यात्रा हम देखें, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे पाठक, पूरे समाज में एक तरह की ये धारणा है कि हिंदी में गजलें बिल्कुल नई विधा है, ये अभी आई है, दुष्यंत कुमार के बाद ही ज्यादा आई है। लेकिन जब हम इसका शोध करते हैं, पीछे पृष्ठभूमि में जाते हैं, तो बड़े चौंकाने वाले आपको अनुभव होते हैं। हिंदी गजल की शुरुआत अमीर खुसरो से मानी जाती है, लेकिन अब कुछ लोगों ने इस पे जो शोध किया तो उन्होंने एक नई जानकारी और मुहैया करवाई। वो कहते हैं कि महमूद गजनवी का जो परपौत्र था मसूद, उसके 3 संग्रह थे, 2 संग्रह फारसी में थे, 1 हिंदी में था। तो अब तो उस बात के लिए भी जिक्र होने लगा कि अमीर खुसरो से पहले भी हिंदी में गजलें कही जाती थी, मसूद ने कही। लेकिन हम देखते हैं कि अमीर खुसरो साहब के बाद तो जैसे उन्होंने प्रयोग किया, एक मिसरा हिंदी में था, दूसरा फारसी में था, उस समय की जो हिंदी थी ब्रज भाषा मिसरे। तो एक तरह से हम देखते हैं कि वो खड़ी बोली का एक तरह का विकास था। दूसरी बात, मैं इसके शास्त्रीय पक्ष की ओर नहीं जाना चाहता, दूसरे मित्रों ने बहुत सारी बातें कर दी। जब ये विधा अरबी फारसी से होती हुई उर्दू में आई और उर्दू से हिंदी में आई, तो आज का जो भाषा वैज्ञानिक है वो हिंदी और उर्दू के बीच कोई ज्यादा सीमांकन रेखा नहीं खींचता। अगर उसके रस्मुल खत को हम हटा देते हैं, अगर उसकी लिपि का अंतर ना हो, तो 80% क्या 90% हम देखते हैं कि वो हिंदी और उर्दू में कोई खास अंतर नहीं है। तो उर्दू से हिंदी में जब स्थानांतरित हुई ये गजल, तो कोई ज्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ एक मेहनत करनी पड़ी कि उसके जो सरोकार उर्दू में थे वो हिंदी में आके बदल गए। उर्दू की जो गजल थी उसमें रोमानी भाव सबसे अधिक था। उसकी जो गजल का तो अर्थ ही ये है कि महबूबा से बात करना, या हिरण की चीख है, कोई कातना बुनना कहता है। लेकिन जब वो उर्दू से हिंदी में आती है तो वो हवेलियों की, सामंतों की, उन मुजरों की, उससे सबसे दूर हो जाती है। उसके सामाजिक सरोकार इतने पुख्ता हो जाते हैं कि वो जीवन से जुड़ने लगती है। और जीवन की कड़वी सच्चाइयां जब आएंगी, जब आपका कथ्य बदलेगा तो आपका डिक्शन भी बदलेगा। तो वो डिक्शन बदलना शुरू होता है। श्री फरहाद के किस्से नहीं होते हैं, गुलो बुलबुल के किस्से बंद हो जाते हैं, परियों की कथाएं उसमें नहीं है। वो रोमानी भाव की जगह हम देखते हैं कि उसमें समाज का यथार्थ आने लगा। आम आदमी की आह और कराह, मैं तो ये मान के चलता हूँ, दोनों उसमें शामिल होने लगी। और आप देखेंगे कि भक्ति काल में मीरा के बहुत सारे जो पद हैं वो गजल की बहरों में। कबीर की तो एक गजल बड़ी कोट की जाती है, अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी का, रहे आजाद या जग में हमन, दुनिया से यारी का। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है, हमन सरबोझ भारी क्या। ये कबीर की गजल है। तो भक्ति काल में भी हम देखते हैं कि हिंदी गजल की उपस्थिति है। इसी तरह मध्य काल में जब दखनी हिंदी का जो प्रभाव था, वजही, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली दखनी, इनकी गजलें ऐसी लगती है जैसे कमाल की गजलें हैं। एक तरह से बिल्कुल जिसको शिफ्ट ऑफ पैराडाइम हम मान सकते हैं, ऐसा हुआ है। और एक कुली कुतुब शाह की 5 गजलें राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी की काव्य धारा में शामिल की हैं, और ये मानते हैं कि ये हिंदी की रचना है, हिंदी की गजलें। इसी तरह से रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि हातिम के समय में उर्दू के महाकवि सौदा हुए हैं,
जो पहले हिंदीपन में सनी शायरी नहीं बल्कि सर्वसाधारण की प्रचलित हिंदी भाषा में शायरी करते हैं, कविता कहते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में लिख रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि 17वीं और 18वीं सदी में जब संत कवि हमारे आए, संत कवियों ने, जब संत कवियों की भाषा बिल्कुल आम जनता की भाषा है, वो सर्वसाधारण की भाषा है, उस सुधकड़ी भाषा में हजारों हजार जितनी हमारी लोक भाषा है उनके शब्द भी हैं। उर्दू और हिंदी के बीच में जो सेतु का काम किया, ये बड़े ध्यान से सुनना, हिंदी और उर्दू के बीच में जो मिलाने का काम किया, एक पुल का काम किया, उसकी शुरुआत हमारे संत कवियों ने की है, दक्षिणी हिंदी के कवियों ने की है। तो हम देखते हैं कि उस समय की जो चरणदास हैं, तालिब शाह है, कुंवर सैन, गंगादास, प्रेम सागर, इनकी जो भक्ति की रचनाएं हैं वो सारी की सारी गजलों के मीटर में। और इसी तरह से जैसे अभी राधा वल्लभ जी बता रहे थे कि भारतीय हिंदू ने संस्कृत में गजलें कही, उन्होंने हिंदी में गजलें कही और रसा उपनाम से उन्होंने कही। रसा उपनाम से उनकी बहुत सारी गजलें हैं। उन्हीं दिनों गोपाल लाल गुल का एक संग्रह छपा 1872 में, उसको हिंदी का पहला मुकम्मल गजल संग्रह लोग मानते हैं और उसमें 30 गजलें हैं। हालांकि उसका इतना लंबा चौड़ा महत्व नहीं है, गुलबहार नाम है उसका, लेकिन एक तरह से हिंदी गजल की शुरुआत जो अमीर खुसरे से हुई, पहला गजल संग्रह वो गुलबहार मानते हैं, उसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। अब द्विवेदी युग में जब आते हैं हम, श्रीधर पाठक है, लाला भगवान दीन है, मैथिली शरण गुप्त की एक कविता जिसको हम रोज पढ़ते हैं, वो गजल के छंद में है। इस देश को है दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए, ये गजल का छंद है। अच्छा, 20वीं सदी में त्रिशूल उपनाम के कवियों ने जो लिखी, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, राम प्रसाद बिस्मिल की गजलों का तो क्या मुकाबला है, जिसको सुन के अब ये बात मैं जब वो कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब इस शेर की भाषा देखिए, हमारे दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। ये थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन बिस्मिल का वो शेर के वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। ये भाषा का संस्कार सर्वसाधारण तक पहुंचाने का काम हिंदी गजल ने किया है। अच्छा, उसके बाद जब छायावादी कवि आते हैं हमारे, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी है, निराला का तो एक पूरा संग्रह है, बेला, वो गजलों का संग्रह है। उसके बाद जब हम छायावादोत्तर कविता में आते हैं, उस समय तो धूम थी एक तरह से, राधा वल्लभ शास्त्री है, राम स्वरूप सिंदूर है, बलबीर सिंह रंग की गजलें तो जब वो मंचों पे बैठते थे और मंचों पे जब सुनाते थे वो तो कमाल की थी। पधारी चांदनी है तुम कहाँ हो, तुम्हारी यामिनी है तुम कहाँ हो, दिल बहुत बेकरार है यारो, मौत का इंतजार है यारो। उसके बाद जो प्रयोगवादी कवि आए, उनमें सबसे बड़ा योगदान जिन्होंने दिया, मैं शमशेर बहादुर सिंह को मानता हूँ। शमशेर बहादुर की गजलों में हालांकि उसमें उर्दू का रंग है, लेकिन हम उसे उर्दू नहीं मान सकते। मैं ये मानता हूं कि हिंदी और उर्दू हिंदुस्तानी है, और उस हिंदुस्तानी में उन्होंने गजलें कही। और उसके बाद शंभुनाथ, नीरज, बाल स्वरूप राय, रामावतार त्यागी, सूर्यभानी गुप्त, इन लोगों ने गजलों के तेवर में जो किया, जब हिंदी में गजल। अच्छा, एक बात मैं खास तौर पे रेखांकित करना चाहूंगा, और रहमान साहब बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में ये कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका जदीद शायरों ने निभाई है। हिंदी और उर्दू के बीच की जो दूरी है, जो भाषा का संस्कार है, वो उन लोगों ने किया है। शकीब जलाली की आप गजलें पढ़िए, आप विमल कृष्ण अश्क की गजलें पढ़िए। विमल कृष्ण अश्क लिखते हैं, अब के बाहर आई तो आंखें उजड़ गई, सरसों के पूरे खेत में पत्ता हरा न था।
उसे छत पर खड़े देखा है मैंने कि जिसके घर में दरवाजा नहीं है। ये वो शायरी की टोन है हिंदी गजल ने जिसे अपनाया। मैं ये मानता हूं कि दुष्यंत कुमार के आने से पहले हिंदी गजल के जो उर्दू गजल के जो ये जदीद शायर हैं, चाहे वो बशीर बद्र साहब हैं, निदा फाजली हैं, विमल कृष्ण अश्क हैं, शकीब जलाली हैं, इन लोगों ने हिंदी और उर्दू के बीच की तमाम दूरियों को समाप्त किया और समाप्त करके एक ऐसी भाषा का रचाव किया जिसको आम आदमी सड़क पे बोलता है। दुष्यंत कुमार अपनी किताब की भूमिका में लिखते हैं कि मेरी गजलों की भाषा वो भाषा है जब उर्दू फारसी के सिंहासन को छोड़ के नीचे उतरती है और हिंदी संस्कृत के सिंहासन से नीचे उतर के दो बहनों की तरह आम सड़क पे बोलने वाले आदमियों की भाषा में जो बात करते हैं, मेरी गजलों की वो भाषा है। और आज मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूँ कि अब हिंदी और उर्दू गजल का जो भाषा का मुहावरा है वो एक तरह का है। उर्दू का कोई भी शायर इस समय जो लिखने वाला है, नाम गिनवाने की आवश्यकता नहीं, रहमान साहब आपको बता देंगे या बता चुके होंगे कि वो उन सब की भाषा इस समय आम आदमी की भाषा। वो जमाना गया जब हम पढ़ते थे तो एक कवि के बाद पीछे शब्दार्थ और ग्लोसरी दी होती थी और हम उसके अर्थ पढ़ के आइडिया लगाते थे। अब ऐसी स्थिति ना उर्दू में है ना हिंदी में है, आम भाषा में सीधी सादी बात कहते हैं। दुष्यंत कुमार ने आके एक चीज जो पैदा की वो ये की कि जिस विधा में हम रोमानी बात करते थे, मन की बात करते थे, बहुत नाजुक ख्याली जिसमें आती थी, वो नाजुक ख्याली की जगह जब एक कल्पना कीजिए, आपातकाल का माहौल है, लेखकों के ऊपर पाबंदी है, कोई बोल नहीं सकता, बहुत बड़ा सेंसर है। गजल एक ऐसी विधा है जो इशारों में बात करती है, उसकी सांकेतिकता इतनी जबरदस्त है कि वो सच्ची सच्ची बात कहेगी, लेकिन वो इस अंदाज से कहेगी कि सामने वाला उसको सेंसर नहीं कर सकता। जब वो कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इसी तरह जब वो कहते हैं कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ये एक तरह राजनीति का जो मुहावरा था, जो जड़ता हमारे दिमाग में आई थी। आपातकाल के दिनों में हम देखते हैं कि हर भाषा की जितनी विधाएं हैं सारी की सारी नतमस्तक हो गई थी, सबने सर झुका लिया था। उस समय गजल एक ऐसी चीज थी, दुष्यंत की गजल ऐसी थी जिसको जयप्रकाश नारायण कदम कुआ के अपने यहाँ से पढ़ते थे। बदलाव की जो आकांक्षा थी, कर गुजरने की जो आकांक्षा, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। लगता है कि पूरे एक नक्काशी कर दी उन्होंने हिंदुस्तान की स्थिति की। कभी जब वो कहते हैं कि भाई इस तालाब का जल गंदा हो गया, इसे बदलना चाहिए, जिल्द में तब्दीलियां करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो दुष्यंत कुमार के इस मुहावरे ने हिंदी के उस तमाम पीढ़ी को, जो पीढ़ी अब मैं एक छोटा सा एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। गजल की लोकप्रियता की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो बहुत छोटी सी बात छोटे छोटे शब्दों में आम आदमी की भाषा में लोगों तक पहुंचा देती है। उसका हर शेर इंडिपेंडेंट है, ऐसा लगता है जैसे गुलदस्ता है। एक मित्र उसे गैलेक्सी ऑफ थॉट कह रहे हैं और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई वो गैलेक्सी ऑफ थॉट भी है, गैलेक्सी ऑफ सेंसिटिविटी भी है। वो आपको ट्रांसपोर्ट करती है, वो आपके जहन में आ जाती है, आपको याद हो जाती है। मुक्त छंद की कविता प्रयोगवाद में नई कविता के दौर में आम आदमी से इतनी दूर चली गई थी, वो उसके स्मरण शक्ति में नहीं रहती थी, उसकी यादाश्त का हिस्सा नहीं बनती थी, जीवन का हिस्सा नहीं बनती थी।
वो जो खला पैदा हुई, जो शून्य पैदा हुआ, उस शून्य को भरने के लिए गजल की विधा ने बहुत बड़ा काम किया। और देखते हैं, अब आप देखिए कि उस विधा में जो रोमानी भाव शुरू हुआ था, पूरी दुनिया का रोमांस उसमें था, दिल की हर धड़कन उन्होंने उसमें जज्ब की है। इतनी कमाल की नाजुक ख्याली है कि आप बता नहीं सकते। हमारे मित्र कहते हैं कि जब वो हवेलियों से घुंघरुओं को छोड़ के जब चौपाल में आती है तो वो मदिरा की जगह कड़वा और कसैला नीम का पानी पीती है, और उसके सरोकार, उसकी टोन निरंतर बदलती रही है। ये गजल की सबसे, देखिए वही विधा जिसका विरोध उर्दू वालों ने भी किया एक वक्त में, बल्कि एक आंदोलन चला था, आज वो विधा इतनी लोकप्रिय है कि अंग्रेजी तक चली गई है। हिंदुस्तान की तमाम 24 भाषाओं में गजलें कही जा रही हैं, खूब कही जा रही हैं। और मेरा ये मानना, हम साहित्य अकादमी में जब नए लोगों को, युवा लोगों को आमंत्रित करते हैं रचना पाठ के लिए, तो हमें हैरानी होती है, क्या तेलुगु, तमिल, गुजराती, मराठी। अब देखिए, उर्दू जैसी लताफत हर भाषा में नहीं है, उर्दू जैसी इमेजरी भी नहीं है, उर्दू जैसी परंपरा भी नहीं है, लेकिन हर लेखक ने, हर भाषाविद ने, हर भाषा में कहने वाले गजलकार ने अपनी भाषा के अनुरूप अपनी डिक्शन तैयार की, अपनी भाषा के अनुरूप उन्होंने छंद में भी परिवर्तन किया, और वो परिवर्तन कोई बुरा नहीं है। अब उर्दू की हर चीज को, अब कई बार मेरे पिताश्री स्वयं उर्दू के बड़े आलोचक थे, बड़े विद्वान थे, वो मुझे कई बार छेड़ते भी थे, कई बार कहते थे अरे वो हमारी बात, वो लताफत कहाँ से लाओगे। लेकिन हमने कहा कि हमारा सरोकार अब लताफत रहा ही नहीं, हम उस नाजुक दौर से गुजर चुके हैं, अब जितनी मुसीबतें हम झेल रहे हैं। फिर एक बात और है, हर भाषा ने अपनी तरह, मुझे कई बार वो छेड़ते थे, तो शहर को शहर के कैसे बांधेगा, कैसे करेगा। तो मैं भी मजाक में कह देता था, जब आप शेख व ब्राह्मण कह सकते हैं, ब्राह्मण नहीं कह सकते, तो हम भी टोन अप कर सकते हैं। तो हर भाषा ने थोड़ा उसको टोन अप किया, और शुरू में तो हमें ये अजीब सा लगा था, विद्वानों को भी अजीब सा लगा था। अब विद्वानों ने भी उस भाव को, ये जो शुद्धतावादी प्रवृत्ति है, भाई भाषा और विधाएं और कविता तो एक बहता हुआ दरिया है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। तो ये बहता हुआ पानी राह बना रहा है। शुरू में इसमें कोई तो नहीं, बहुत सारे लोगों ने गलत तरह के प्रयोग भी किए हैं, लेकिन ये सारी चीजें छट जाती हैं। अब मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूँ कि 24 की 24 भाषाओं में अब परिपक्वता आ गई है। 24 की 24 भाषाओं में उन्होंने अपनी भाषा के अनुरूप अब उन छंदों को ढाल लिया है। दक्षिण की भाषा बड़ी हमारी भाषा से कुछ ज्यादा लचकदार होती है, उन्होंने उसको भी अपने फोनेटिक्स के हिसाब से ठीक किया है। तो मैं ये बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि उर्दू तो हमारे यहाँ पैदा हुई है, हमारी अपनी जबान है, हमारे पंजाब में हुई है। तो गजल का सबसे बड़ा उपादेयता भी मानता हूँ, महत्व भी मानता हूँ, और गजल के प्रति मैं अपना आदर भाव व्यक्त करता हूँ। इस मुल्क की जो मिश्रित संस्कृति है, जो कंपोजिट कल्चर है, अगर उस कंपोजिट कल्चर को किसी ने वाणी दी है तो वो साहित्य में केवल गजल की विधा है। हमारी मिश्रित संस्कृति का सबसे उज्जवल रूप, जिसमें हमारी भारतीयता है, जिसमें हमारी, जिसको हम कह सकते हैं कि असली राष्ट्रीयता उसी में है। शम्मे हरम हो या के दिया सोमनाथ का, वो हमारी गजल में रोशन हुआ है। हमारी गजल की उस रोशनी में हमारे आम आदमी ने अपनी जिंदगी को देखा परखा है। तो इस समय मैं ये बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि हिंदी गजल की अब जो सरोकार है वो यथार्थ से अनुपूर्णित है। आज की समस्याओं पे बात करते हैं, हिंसा पे बात करते हैं, अलगाव की भावना से बात करते हैं।
और गजल का ये रूप सबसे खूबसूरत। गुलाम रब्बानी ताबा साहब का एक शेर मुझे याद आया। वो कहते हैं कि बेरब्त भी नहीं है, बारब्त भी नहीं, जालिम की हर अदा में अंदाज है गजल के। गजल का ये जो डिटैचमेंट है, अटैच होते हुए भी, वो बेरब्त होते हुए भी बारब्त है समाज से। इशारों इशारों में गहरी से गहरी बात कह देता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि गजलकार चपत तो अपने गाल पे लगाता है, लेकिन निशान पूरे समाज के बदन पे उभरते हैं। ये गजल की सांकेतिकता है। वो इशारों में सबका पर्दाफाश कर देता है, कलई खोल के चलता है। ये सरोकार सबसे बड़े हैं। जो हमारा भ्रष्ट आचरण है, नारी का शोषण है, उत्तराधुनिकता का काल है, उसके सारे सरोकार हैं। हिंदी गजल में हजारों हजार लेखक लोग निकले। अब मैं अगर उसको सुनाने लगूं, उनके नाम गिनाने लगूं, तो दुष्यंत कुमार के बाद की जो पीढ़ी है, अदम गोंडवी साहब है हमारे, उदय नारायण प्रताप है, ज्ञान प्रकाश विवेक है, बाल स्वरूप राय है, अनूप जी हैं, और बहुत सारे इतने ज्यादा लोग हैं। प्लीज कंक्लूड करिएगा सर कौशिक साहब। प्राण शेरी है। मित्रों, मैं भी बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। हालांकि मेरी मीटिंग का शुरू हो गया है, बेल भी बज गई है, बहुत सारी बातें जो रह गई हैं। एक बार फिर राधा वल्लभ जी को, मालती जी को, प्रमोद और अंशुल रहमान साहब को, सबको सादर प्रणाम। गजल की ये जय यात्रा हिंदुस्तान के साहित्य में अगले दशक में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, मेरा यकीन है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर कौशिक साहब, आपको इतने आपने बिजी टाइम में से निकाला है। और अपनी बात में सर, जो आपने हिंदी गजल से संबंधित जितने भी मिथक हैं, मुझे आज उसमें से बहुत सारे जो तोड़ा है। आपने जो दुष्यंत जी के संदर्भ में जो बात कही ना कि सिंहासन से उतरने वाली, तो उस सेंस से मुझे लगता है कि आपने हमारी जो एक इमेजिनेशन को एक नए सिंहासन पे बिठा दिया है। तो आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत शुक्रिया। टाइम की लिमिटेशन है, नहीं तो हम सारे स्पीकर्स ने, मुझे लगता है अगर हमारे जो है ना रिसर्च स्कॉलर्स बहुत सुन रहे हैं, तो उनको तो बहुत सारा एक मटेरियल इंपॉर्टेंट मिल गया है आज से। थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, मालती जी का, प्रमोद जी का। अब तो हालत ये है कि हिंदी में जो मुक्त छंद के जितने लेखक थे, वो सब, हमारे केदारनाथ सिंह जी ने अंतिम दिनों में गजलें कहनी शुरू की थी, और उनके जो आखिरी जो संग्रह है मतदान में झपकी, उसमें भी शामिल है। आपके हमारे जितेंद्र प्रसाद जी, जो इतने बड़े आपके कवि हैं, रचनाकार हैं, मित्र हैं, वो आजकल बहुत खूबसूरत गजलें कह रही है। और कोई बड़ी बात नहीं, बहुत जल्दी उनका गजल संग्रह भी आएगा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जुड़ सकूंगा। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी। नमस्कार। Now I think I have the honor to invite a very distinguished person who will do justice to assigned Professor Anisur Rahman Saab. Always support for us, for always guiding us, a true scholar, a true public intellectual who have served the domain of language, literature, culture for the last 4 decades now. Professor Rahman, we are truly honored, truly privileged to have you. So please take over and enlighten, this presentation is called the epilogue to ghazal tradition and a critique on the English ghazal. Sir, over to you, sir. Thank you, Dr. Pramod Kumar. हमारी ट्रेन तो सुबह 11 बजे सही वक्त पे चली थी, लेकिन ऐसा हुआ कि सफ़र ज़रा लंबा हो गया है और हम कोई 15 या 20 मिनट देर से चल रहे हैं हमारी गाड़ी। गज़ल के इस सफ़र में देर होना ही है, आप जल्दी कर नहीं सकते। और जब प्रोफेसर मालती माथुर से हमारी बात हुई कि ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, तो मैंने कहा ज़रूर होना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी कहा कि अगर हम 3-4 घंटों में गज़ल को समेटें तो शायद समेट नहीं पाएंगे, लेकिन ये करना ज़रूरी इसलिए है कि अगर हमने शुरुआत कर दी
तो इतनी भाषाएं हैं खुद हमारे यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिसमें गज़लें लिखी जा रही हैं और बहुत कुछ स्कोप है बात करने का. Therefore, it's a very welcome step and I greatly appreciate the effort that IGNOU has done. IGNOU से तो हमारा वैसे भी पुराना रिश्ता है आप सब लोगों से जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, दहाइयों का मैं कह सकता हूँ. तो मुझे तो ख़ास तौर पे खुशी है कि एक बहुत ही सक्सेसफुल सेशन आपने आज किया. And I really wish you all the very best for the next programs that you wish to do in the Indian languages, especially with reference to this poetic form that has been so popular. So this session has been extremely enriching for me personally. Let me tell you very frankly, however much you read about Ghazal and debate the Ghazal as such, but you will always be lacking somewhere or the other because there is so much to explore and so much to know. And that's why I say it has been a very enriching form for me. Enriching engagement for me in this morning. I would say also that Ghazal is a form which is unlike any other form in the world literature. And I use this word world literature with caution. It's only in the literal sense that I'm using the word world literature because it is a concept which is being popularized these days. And I do not entirely agree with that concept of world literature. But that is a different debate altogether. So my point is that Ghazal is a form unlike any other form in world literature. And also it's probably, and I think probably is not the right word. And also I would say certainly, it's one of those forms which has been the most popular in the world literature. So from that point of view, thinking about Ghazal and talking about Ghazal is without an end. You will go on and on. And because you have so many languages that you can talk about when you think of Ghazal and when you talk about Ghazal. That's why and at one place I wrote it as a very infectious appeal in my book where I have put together Urdu ghazals from the 16th century onwards to now. I have used this word, and in the long introduction that I have written there, I have tried to trace out the trajectory of this form, which is a very unique form, and you have already known about it during the 5-6 talks that we have had so far since morning. So I'm doing a kind of an epilogue, and what can I do in the epilogue? And I have to be very short and very brief also because much has already been said, but a few points in the form of epilogue that I will say. Reference has been made to the Arabic heritage of the Ghazal. And very rightly, my friend, Professor Ahmed Mahfouz has made a good distinction that we should not be generalizing that it comes from Arabic so per se. It's there in the Tashbib and the Nasib, which is the kind of a prologue, kind of a qasida where it was a prologue, and there you have the romantic ideas. Poetry in Arabia was a communal activity, and people used to gather and people used to write and sing and present two kinds of poems there: poems of valor, poems of valor and courage, and then poems in praise of their patrons, you can say, and then on the other hand, poems which were basically romantic hankerings, about romantic hankerings because the lovers and the beloved had separated. So it was a kind of a pleasure-seeking conference that they used to have, and then that is how it all started. I'm not going into those details. So that reference has already been made by Professor Ahmed Mahfouz. But very interestingly, look at the trajectory of Ghazal. When it comes out from there, it goes to Spain and to Africa. And in medieval Spain, you have ghazals in the Hebrew. Moses ben Ezra is supposed to be one of the major writers of ghazal who wrote in the 11th century. Mid-11th century, he was born. And then he also wrote in the Arabic language. And when you move on from there, you go to the West African languages called Hausa and Fulfulde. It's wonderful trajectory of this form. And that is why I said it has been probably the most popular of all the forms in the world literature. So it goes to the West African languages, Hausa and Fulfulde. And of course, they use the Arabic meters, which they borrowed from there, but they wrote their imagery and developed their own metaphors and developed their own symbolic configurations. Then it comes to Persia, which ultimately proves to be the finest ground for ghazal, and after that India, of course. But Persia, it began in the imitation of the Arabic form in the Persian language, and that was in the mid-8th century. So about 100 years and 150 years later, it reaches Persia, and it is how it gets its fluorescence in the hands of Abdullah Jafar Rudki. Abdullah Jafar Rudki was a poet of the late 19th century, you could say, and 10th century he passed away, mid-10th century he passed away. So most important ghazal writer is Abdullah Jafar Rudki, and then you have Rumi,
and we have Hafiz in the 13th and the 14th century. I'm just giving you a very, dropping names so that you can have the idea of the trajectory that it has had. During the 19th century, the influence of Sufism, which Maltiji has referred to, which Pramod, you have also referred to, and everyone refers to. So the Sufi impact is there. The Persian ghazal, it starts getting its contours much more clearly, and it starts identifying itself with all its characteristic features. From there, it comes to Turkey. And in Turkey, you have a very important ghazal. I'm only naming the very important ones, Fuzuli, Fuzuli. And Fuzuli wrote towards the middle of the 15th century. And he wrote in the Azerbaijani Turkish, the Azerbaijani variety of the Turkish language. And he distinguished himself as a poet of that language and wrote ghazal basically. And then you have the most important of the Turkish poets, whom you remember even now with great reverence, and that is Ali Sher Nevai. Ali Sher Nevai wrote in the 15th century, born towards the middle of the latest 15th century, 1441 to be precise, and then 15th century he lived on and passed away in the first year of the 16th century. Ali Sher Nevai was the major poet of the Turkish language. He was an Afghani by birth, and he wrote in the Chagatai language of Turkey, in the Chagatai kind of the Turkey, you can say, and is a major master of the Uzbek literature. So in the hands, it passes from one to another, and then one place to another place, and it goes from one place to another, finds a destination, it keeps on changing the destination, the language and the metaphors and the symbolism and all, the narrative and the subject material, as you can call it. And then the most important of all the destinations from where we are talking about today, it reaches India. And we name Amir Khusro when you think of that. Amir Khusro, and one very famous ghazal that we often talk about. We don't have enough of Amir Khusro available with us, and that is the Halim Iskima Kunta Ghaful Durai Naina Banai. But it has been sung, everyone knows about that. But when you move forward and you come across another poets, you reach in this late 16th century, a poet like Quli Qutub Shah, Priya Baj Peala Priya Jaina. He was the 5th emperor of the Qutub Shahi dynasty of Golconda. A very major poet, a very secular person. He combined people, languages together and developed a kind of poetry that became a milestone for the Urdu poets to imitate and to write in the later stages. That is 16th century. In the 17th century, you come across, Mahfouz Sahib has already talked about that poet, a major poet, that is Wali Dakhani or Wali Gujarati, as you call that, is 17th century. I'm just naming the important ones. When you reach the 18th century, you come across the greatest of all the Urdu poets who ever wrote, including Ghalib. That is Mir Taqi Mir. Mir Taqi Mir is a major 18th century poet, and he wrote in Persian, but his Urdu ghazal and 5 divans and huge amount of work that he has left behind to mull over, that we have been continuously doing, and it's an endless exercise engaging with her. After that, you come to Ghalib in the 19th century. These are the marks, landmarks, the hallmarks that distinguish the Urdu ghazal greatly. And from Ghalib, you reach, after 19th century, you come to the modern age, where you meet poets like Iqbal, poets like Firaq, poets like Faiz, poets like Nasir Kazmi, and you have a very powerful poet whom I greatly admire, that is Rajendra Manchanda Bani, and Nida Fazli, and Kishwar Nahid, and you name it. That is a long, long list of so many poets who started writing both in India and Pakistan. Luckily, we have not yet divided our literatures, calling Indian literature and Pakistani literature. It's Urdu literature here and Urdu literature there. So as we did at one point of time, English literature, that is British literature, and American literature, that is that. So Australian literature, of which Malti Mathur is a student, and Canadian literature. But luckily, we have still not been talking about Pakistani or Urdu literature as such, or Indian literature as such. That is how it is going forward. Now, I will not talk about the form and the features of this ghazal. We all know that, but just let me briefly, in one sentence, mention that it has a certain rhyme pattern, that it follows a qafiya and a radif pattern, that it has A, B, B, A, C, A, D, A type. That is the kind of a form. But one thing very important to take note of is that it should not be confused with dohas. Doha and sher are not the same thing. Doha does not follow the same musical pattern and the same metrical pattern that a ghazal follows, that a sher of the ghazal follows, and at least 5 shares coming together compose a ghazal. That is the general information that one can say.
There is just one idea in a share. You jump from one idea to another when you go from one share to another. That is how we all know about ghazal. It's the archetypal poetry of love. And Professor Ahmed Mahfouz was talking essentially about one aspect of it, but there are so many. But he rightly and wisely did that he spoke about the love poetry of which it is the epitome. You have the most important examples of love poetry that you have at all in the Urdu language. It is to be found in the ghazal tradition. So archetypal poetry of love, you can say, is there in the Urdu language that it came through. And it's now later, in the later stages, even though it is found earlier, but later you would find that it does not remain limited only to the idea of love. It goes beyond the idea of love. And love is defined and redefined in every age and in every poet, you could say. So it talks about Ghame Jana and Ghame Dora simultaneously, and together it goes in that manner. And that is how it acquires its own contours and its own methods of appreciation and expression. So that is how it goes on, and there are certain things which have been institutionalized. The reference has already been made, but just let me tell you who are the persons who populate this world of the ghazal. There is the ashiq, you all know about that. There is the mashuq, the lover and the beloved, if you could say that. Then there is a very important person there, Raqib. He's all the time envious, he's a rival. He's a very important character in the tradition of the Urdu ghazal. He's full of rivalry against the beloved and against the person who is in love with his. Then you have this messenger, the qasid, who takes the message from one end to another and brings back. So a lot of poetry is there about the qasid. This is another third very important character. Then we have Muhtasib. Muhtasib is a god of faith. He guards you all the time. You have a saqi, you know about that saqi. You have a qatil. He is one who devastates you. So he is another important character. You have a sheikh and you have a brahman. These are about 7, 8 important characters who populate the Urdu ghazal. And wherever you read, you will find in the traditional ghazal and also in the later part, many more characters join. And that is when the protest poetry comes into being, and many more important writers, some references have already been made too. Apart from the characters, there are certain concepts also which have been universalized and which have been also institutionalized. For example, hijr. Separation is a very important concept in Urdu ghazal. Along with hijr goes the visal, that is union. Then ishq as a concept, maikhana as a concept, that is the tavern where you go and drink. Then paimana as a concept where you have the cup and the cask and the jar from where you drink. You have the qafas, the nest where the bulbul is. You have the chaman, that is the garden. You have the bijli, that is the lightning which kills and which devastates. You have the ashia, which is devastated, which is the daman of the person. And the gareban who tears his collar, and after that he finds himself to be a lunatic. And the gul and the bulbul and the bismil, all these are the concepts. These are institutionalized concepts of the Urdu ghazal. But all these are institutionalized concepts of the earlier years. In the later years, you will find that new ideas, new conceptions have come together. And of course, some references to that have been made by my good friend just a while ago when he was speaking about Hindi ghazal, that is Madhi Kaushal. So there are several examples. I will not go into the examples because I would like to take you to the English tradition, how it all developed. But broadly speaking, ghazal has not all the time been eulogized. One important Urdu critic says that it is a semi-savage form of Urdu poetry. Semi-savage. Urdu की गजल जो है वो एक नीम वहशियाना सिन्फ़े सुखन है. A very important critic of Urdu says. And then बिल्कुल इसके बरक्स, there is another opinion which says कि ये उर्दू शायरी की आबरू है. This is the prestige of Urdu poetry. So first was Kalimuddin Ahmad, another is Rashid Ahmad Siddiqui, who says that. लेकिन सबसे अच्छा जो डेफिनेशन मुझे लगा वो लगा फिराक साहब का. उन्होंने कहा कि ये इंतहाओं का तसलसल है. It is a series of climaxes because there are 5, 6, 7, 8, 9. और फिराक साहब तो गजलें पता नहीं कितने शेर कहते थे, 20, 25, 30 शेर कहते थे और उनकी गजलें लंबी होती थी. So each couplet, each share, you would say, even couplet is not the right word for a share. So each share you would find is complete unto itself, and it opens up new avenues for you to enter into it. And that is how this whole ghazal is composed and constituted of. So it is a series of climaxes. You go from one. So to sum it up, let me say it starts from Arabia, goes to Spain, goes to Africa, goes to Persia, goes to Turkey, goes to South Asia. And in South Asia, and after that it reaches Europe,
if I go to the another direction of the globe, South Africa, Europe, and North America, Australia, and Canada, and where not. Everywhere it's all around, you will see. So I'm not going into the examples, but let me now come to the English part of it, and I will try and keep pace with the time also. My conclusion, therefore, is that forms, literary forms, are not sacrosanct to any particular language or a literary tradition. That is very well proven by the Ghazal itself. Ghazal, which originated or had its origin somehow or the other in Arabic language, and from there to Persian and then to Urdu. So it has not been kept or monopolized by these languages only. And no, that is why I saw there is no language can ever be sacrosanct, no form can ever be sacrosanct. And any form, any language, anywhere can use this. And that is what has been proved by the Ghazal, by the journey or the trajectory of the Ghazal. Ghazal explores new images and metaphors from language to language and from territory to territory, if I were to say. It's a meta text of a text and of a culture. It's a meta text. I always said Ghazal is a meta text of a text, and it's the meta text of a culture. It goes beyond the text and it goes beyond the cultural identifiers, and that is where you find the Ghazal gaining its greatest strength that it has had, and it has been a history of more than 1500 years now. So in 1500, more than 1500 years, over 1500 years, we have come to realize that Ghazal is a meta text of a culture and meta text of a literary text that you have been attuned to reading all these times. It has moved away from the center and it's to be found everywhere now. And center, if at all, there is no center now. There is no, if you students of post-colonial literatures would know, there is no center as such. Similarly, Arabic is no center, Persia is no center, it's everywhere, and every location is a center for the Ghazal from where it originates. It's a question of literary cross-breeding. It has literary cross-breeding, say, from one language to another, from one space to another, from one territory to another. So the English Ghazal is a part of that only. And it's a literary curiosity, I would say. Ghazal as such, and the literary Ghazal, the English Ghazal, basically, it is a literary curiosity. Many poets are trying their hand on this Ghazal. It is because of the richness of the precision that this Ghazal brings to you. Only in 2 lines you have to tell the whole tale, and that is how the English poets also were enamored by this form of poetry. Great appeal of the master practitioners. Why is it so popular? Because it is so very precise, because it's so very tight in its form and its structure, because it has had some very archetypal symbolism that it has brought us to us. Also because the lure of the masters, the great masters have written their works in this Ghazal form, therefore we are also enamored. So there is a desire to domesticate this form. And all of us are trying to, so kind of a multiculturality and musicality that you find with this multicultural kind of combination that comes through is. This Ghazal has been in English also been remembered by various names. Call it Ghazal, some poet call it, Robert Bly calls it a tercet Ghazal. John Thompson calls it a bastard Ghazal. It has the qualities of a bastard, it's not pure. I would not call it a bastard Ghazal, I would call it a very enriched kind of a Ghazal, which has combined so many strengths together of language and of traditions. And Adrian Rich, one of the most important American poets, calls it blue Ghazals. And then Douglas Barber, whom I met and whom I interviewed, and he wrote breath Ghazals. He used to read like this. He used to just take a deep breath, speak a few words, then exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. He called it breath Ghazal. Now you have Phyllis Webb, another important Canadian poet, who calls it anti-Ghazal, because she says that Ghazal is all about women, and I'm no longer going to write about women. The beloved is not my subject. I'm not going to write about the beloved. So she said, now I'm taking you to another strand, and there I'll be finishing. Pramod, don't be worried about that. I'll be finishing very soon. In Germany, the Orientalists were enamored by this form. And Friedrich Schlegel was the first to be enamored by this. He was 18th century Orientalist. He wrote Ghazals in the German language. Goethe was another Orientalist who was very, very enamored by this. He was one who was born towards the middle of the 18th century and continued in the 19th century, 3 decades in the 19th century as well. Then you have von Platen, you have Ruckert, number of German scholars, German Indologists and Orientalists who were basically in the 18th century and in the parts of the 19th century. They all wrote Ghazals to the extent that they published their complete works, called them Divan, and that is how it is spread from there in that part of the world, that is the European part of the world.
When you come to the English-speaking world, you come to the American poets, and this is because of the two persons who have done this. This has been something very magical. In 1971, Ejaz Ahmad published a book called Ghazals of Ghalib. This was done by Columbia University Press. Sadly enough, the title page, the image that you have on that title page, later it was published in India by Oxford University Press with a different cover design. But the first cover design that you have of this book, that is 1971, it says Ghazals of Ghalib, but it doesn't have on its frontispiece, that is on its title page, the design. It has a few shades from the Qasida. Such a misinterpretation. The whole project has been waylaid in the very beginning, in the very title page design of the title page. It's a book about the Ghazal of Ghalib, translations of Ghalib's Ghazal, but the title page, the design of the title page, is an extract from a Qasida of Ghalib, if you look at the first edition. So that was a major mistake that was committed, and it was also doing a great disservice to the Ghazal, cause of Ghazal, that Ejaz Ahmad was very genuinely trying to propagate. It all happened in the year 1969. That was the centenary year, death centenary year of Ghalib. And people everywhere, and Agha Shahid Ali says that no, people didn't know about Ghalib. True, people didn't know about Ghalib. Adrian Rich hadn't heard. So what Ejaz Ahmad did, that he asked 7 American poets if they had heard about this great Indian poet called Ghalib. This is his centenary year, death centenary year, and no one was aware of that. Agha Shahid Ali says, I felt it was a kind of an humiliation, a kind of an insult to my language, to my culture, to my literary capital. And therefore, he too started working towards that direction. So Ejaz Ahmad taught what this form is, how Ghalib, who was Ghalib and how he wrote. And he gave some couplets, some ghazals to 7 American poets, and he asked them to translate. This book is important because it makes a mark in translation studies, in the sense that it is an experimental work. Not that I am pleading for the book that it was good translation of Ghalib. In fact, there are very bad translations. In fact, they are not Ghalib at all. It is far removed. But I greatly appreciate that book because it does a wonderful job of bringing Ghalib to an audience, which was an entirely new audience, and bringing this form to a people. And it was in the preliminary stage. So it had to be like this, that it ultimately came to be. So Adrian Rich published her ghazals in 1917. Ghazals she put together in her book called Leaflets. And then another poet called In a Will to Change. There also she put about, that was also published in 1971. Rich says that I was feverishly writing this because she says that I had only 2 lines at my command, and I had to tell my entire tale in these 2 lines. He didn't have the 3rd line to tell. So far I have been aware of a ghazal, of a poem which had 10, 20, 50 lines, but here there are only 2 lines and only one idea and in 2 lines. So she took it as a challenge and said that feverishly I'm going to write ghazal. She wrote so many, but though not according to the expectations that you might have as an Indian or a Pakistani or anyone who reads ghazal in the sense that we have been reading ghazal. In Rich's ghazal are not of that type. I'm quoting from her. She says in her collected poems, my ghazals are personal and private. Personal and private. American and 20th century. This is where she saves and she makes a distinction. These are American ghazals and these are 20th century ghazals, but they owe much to the presence of Ghalib in my mind. And therefore, I'm quoting her couplet. She says, how is it, Ghalib, that your grief, resurrected in pieces, has found its way to this room from your dark house in Delhi? Now, this is a statement. This does not read like a ghazal that you would read, a ghazal in Urdu or Hindi or Punjabi or something that we have been hearing about. But she says she takes a note and she tries to understand what this form is, and she tries to echo that. Of course, you do not have the same echo that Edmund Rich can bring to you. So how is it, Ghalib, that your grief resurrected in pieces has found its way to this room from your dark house in Delhi? This is in 2 lines. Then she says in another couplet, when they read this poem of mine, they are translators. So I and you, she says, you are translators. And we all are translators. And then she says in the second line, every experience speaks a language of its own. True. Every experience speaks a language of its own. So this is how Adrian Rich is trying to look at this ghazal, and she writes her own kind of a ghazal, and which is 20th century and which is American. The features of Adrian Rich's ghazal is that these are free association of ideas. That is one plus point.
because ghazal also is a free association of ideas. You move on from one couplet, from one shade to another, and the subject changes. She also does the same. There is an inner rhythm close to the original. She is trying to develop that rhythm because she knows very well that it has to be distinguished. If at all one can distinguish ghazal, it has to be distinguished because of the assonance that it has, the musicality it has. So there is an inner rhythm, their inner ear. You have to be sensitive, and you have to sensitize your audience, your reader, so that the ears are trained to take up this flow of the word, and they jump and the ebb and the flow of the words. She also takes the qualities that she takes liberty from the form of the ghazal, but she couldn't help it either. That's how it all. She says at one place, I'm trying to languaging my experience. I'm trying to be languaging my experience. I'm trying to give a language to my experience. And not only that, I would say that she gives a kind of a form to her experience. Another important poet is John Hollander, another American poet. He wrote couplets to define ghazal for the first time. And there he says that this is what a ghazal is, so I'm not going to quote from there. Robert Bly is another important poet who wrote. But coming to Canada, you come across one very important poet, that is Jim Harrison. Jim Harrison, I'm quoting from Jim Harrison, who says, I have not adhered to the restrictions of metrics and structures of the ancient practitioners. He says, no, I can't do that, those metrics. Then says, the couplets are not related by reason and logic. The only continuity is through a metaphoric jump. And that is where he tries to distinguish his ghazal. He says that metaphoric jump is all I know about ghazal, because ghazal is strengthened by the metaphoric jump that it takes. And there he has been successfully able to find that what the basic material is. And I'll give you an example from there, how he thinks of this metaphoric jump. The girl was rendered by the rapist. Full stop. Next half of the first line, I'll send her a healing sonnet in heaven. Forgive us, forgive us, forgive us. You have been raped. I can't do much about you. I can only say, forgive us, forgive us, forgive us. There is a whole thesis about it. It's a great poetry of protest. And this is what he says, that I have been trying to understand the metaphoric jump that a couplet can take, that a share can take. That is how he tries. Another important poet from Canada is John Thompson. John Thompson says, my own interest in the form lies in the freedom it provides to me. So the freedom he tries to actually capitalize on that freedom, and says, being a student of English, he says, Yeats, 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 Yeats. Why doesn't this man shut up? He didn't have T.S. Eliot, W. Yeats, and then he says, Yeats, 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 Yeats. Why does this man shut up? Now we have to talk of someone else, of Hafiz of Shiraz, of Umar Khayyam, of Amir Khusro, of Ghalib, of Mir. बहुत हो चुका Yeats, बहुत हो चुका Ghalib, बहुत हो चुका T.S. Eliot. So this is a kind of a protest that they have against a particular literary tradition, not against, but trying to widen the frontiers of that language. So he says Yeats, 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 Yeats. So why does this man shut up now? Douglas Barber, I found in him a very unique poet. He's a performance poet. I met him in the University of Alberta where I was, and there we had a good session and used to perform his ghazals. And he called them breath ghazals. So at that point of time, he had already written 60 ghazals of the kind, which are performative ghazals. And later he sent the book to me and called it Breath Takes. He called his book Breath Takes. But I asked him that, do you know that your first anthology, which is song book, is in the form of ghazal itself? So he was not aware. Because in the entire book, you only have couplets, 2 lines, 2 lines, 2 lines. And all these couplets were not related with the idea. They were all very free. So I told him, Douglas, you have already written ghazals, but you are not aware of it. And later he took it very seriously. In an interview, we talked about it in detail. And then he came out with a better anthology, Breath Takes, which finally is the culmination of the way. Phyllis Webb is another very interesting poet from Canada who wrote anti-ghazal. In Water and Light, she put together her ghazals. And a very interesting couplet I will quote from her says, 4 or 5 couplets trying to dance in Persia. 4 or 5 couplets trying to dance in Persia. Who dances in Persia now? कोई वहाँ पे कोई रक्स करने वाला है नहीं, तो कौन कहता है? 4 or 5 शेर में हम रक्स. So you dance in 4 or 5 couplets. And these 4 or 5 couplets are the rhythm that they provide to me. Ultimately, after Agha Shahid, after Ejaz Ahmad, it was Agha Shahid Ali who finally clenched the issue.
Agha Shahid Ali, is a technical virtuoso, perfect poet as far as the metrics are concerned. He taught Americans how to write ghazal. So you see, I'm not talking about Australia and Canada and other poets, so let me skip that. Agha Shahid Ali finally brought an anthology called The Ravishing Disunities. Ravishing Disunities, and there he puts together real ghazals in English. That is the final title. And it has 109 poets, and he taught them how to do it, the Qafi and the Radif and all. And then as a result of that, you have this kind of an expression, which is from Kelly Lefebvre. She says, each syllable unwinds its shy request in time. Speak slowly, for it means to rest in time. So what she has done, request in time, rest in time, test in time, blessed in time is the Radif. Rest, blessed, rest, etc. is the Qafi. This is what she has done, and she has learned. And Agha is the person who has taught it. This is how it has to be done. Of course, it's a huge demand to make upon any poet. So Paul Muldoon also, it was Ailing who first soft tape. Let me not read that out. It's a very different kind of experience. Judith Wright in Australia, she doesn't carry out any of the discipline that the ghazal provides to us. She, in the final collection of her poetry that she brought together, there at the end you have around 15-20 ghazals. So she completely takes leave of all. But Agha Shahid Ali's book is a very important book. Anyone who would like to know about the ghazal in English, especially in the English tradition, and coming from all poets, you have Americans, you have Australians, you have Canadians, you have British, you have Indians, lots of. There you can have an idea of what ghazal is like and what Agha Shahid Ali has done. If you think of translations, many poets today are translating ghazal in the English language. Some of them have done it very successfully. I too, in a very poor translation, in my own way, have tried to do that in my own book, which you might have seen. And lots of translations are happening. But more important is that, apart from translations, many of our poets, both in India and Pakistan, have started writing ghazals in the English language. अभी ये बात कही गई थी थोड़ी देर पहले कि मजरूर साहब कह रहे थे कि मैं शादी से इत्तेफाक नहीं करूंगा कि गज़ल अंग्रेजी में, बिल्कुल नहीं लिखी गई है अंग्रेजी में गज़लें जिस तरह लिखी जानी चाहिए. Because most of the English poets who write in India and Pakistan are not fully in a position to observe the rhythm, the rhyme, the qafiya, the radif, the whole say the technique that ghazal follows. I'm very happy to say a very young, very new. I have read just 2-3 ghazals of that poet. He's from Lahore, Pakistan, and he really, Ammar Aziz. He really. I was very pleasantly surprised reading some of his ghazals. He knows what a qafiya is and what a radif is and what is the line length and what is the syllable count and how the whole mood has to be created in particular couplet. I expect that he would be writing more. I wish he writes more. And I wish that many other poets, younger poets especially, they can think and develop a format for themselves. Everyone can develop a format for himself or herself. And they can think like Ammar, as he is doing, a young man from Lahore, I understand, who is writing, and a few ghazals only have it. But I could sense immediately that this is how it has to be done in the English language. And I thought it so because I was myself translating ghazals from the Urdu, and I put together all of them in my book, Hazaro Khwahish, as you might have come across. So I thought of finishing my talk today by referring to Ammar Aziz and to say that this is how one can probably develop this art, this form of ghazal in the English language, because there is a huge possibility lying before us. Lots of things have to be done, new experimentations in language and form and technique and thematology, more importantly, protest poetry that has come into it, the political manifestations that are a major hallmark of the ghazal now. There's no time to talk about all that. But I understand that in all the languages that we have talked about today, and many of the languages that you will be, Professor Mathur, you will be doing in the future, there is so much to talk about. It's an endless exercise because this is one of the forms of poetry, not only Persian, Urdu, Arabic, etc., but in major languages of the world and most of the languages of India. A few days ago on the Facebook, I saw someone writing a Bhojpuri ghazal. And I was very enamored by that. Of course, it didn't follow the exact line pattern that is the Qafi and the Radif. It has the Qafi and the Radif, but the line length, the Bahar as you call it, is not in a position. But what is very encouraging that it has reached out
to Marathi, to Bangla, to Odia, to Gujarati, and to many, many languages. Of course, Hindi is an old story, and Sanskrit, I'm very amazed. I'm really surprised to find what Tripathi has said about Sanskrit. So it has been a very enriching session for me. Thanks a lot, IGNOU. When I say IGNOU, I mean all friends at IGNOU, including your head of the institution, to everyone who is there, my old friends. Great being with you together this evening. My very esteemed colleague, former colleague, Shamla Narayanji is here. I'm very happy to see her after many years. Shamlaji, thank you for being joining. And I'm really happy that we all met together. इस पैंडेमिक का बड़ा फायदा ये हुआ कि मिले तो नहीं, लेकिन एक दूसरे को देखते रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहे, गज़लें कहते रहें, गज़लें सुनते रहें, गज़लें सुनाते रहें। मंत्री जी, आपके लिए ख़ास बात ये है कि सिंस आप गायकी में आपकी दिलचस्पी है, you are a ghazal gaiki fan, and you have to see what this rhythm of the ghazal is and how you can probably imitate in your own gaiki. And I have listened to you, and I know you can do it very well. So all my best wishes to you at the personal level and also at the institution's level. All the very best, and thank you so much for giving me this opportunity. When we talked about this, we were not very sure whether we will be in a position to make it this way, but it has been a great success, I would say, and thanks a lot at the end of it. Thanks. Anyway, thank you, Anis Saab. And as you pointed out, some good has come of the pandemic. Yeah. Because we have lots of online webinars. Yes. Good to see you, Shamlaji, after a long time. प्रोफेसर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने बात शुरू करी थी ना सर, कि गजल की गाड़ी जो 11 बजे चली थी, आपने उसको बहुत एक बहुत खूबसूरत मंजिल पे पहुंचाया सर। और जितना आपने इतना एक बिग रेंज ऑफ नेम्स एंड टाइप्स जो आपने करा है सर, आई थिंक ये तो बहुत अलग लेवल पे गया है। और मुझे लगता है मुझे मालती मैडम को बुलाना पड़ेगा, कुछ लाइक शी हैज क्यूरेटेड द एंटायर थीम। सो मैम, लाइक सम वर्ड्स फ्रॉम योर एंड प्लीज ऑन दिस। Thank you, Pramod. For one, I would like to thank everyone for delaying their lunch. But then I think with this delicious repast that we had, we've all forgotten about the physical hunger that we have for food. So एक जो त्रिपाठी जी ने कही थी कि देखिए, मेरे से जब मिसेस माथुर की बात हुई थी, वो कह रही थी कि संस्कृत में भी गजल होती है क्या। एंड आई डिड टेल हिम, आई सेड मुझे बहुत ग्लानि है सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं थी कि संस्कृत में भी गजलें लिखी जा रही हैं। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई वाज एबल टू गेट इन टच विद हिम। और उन्होंने इतनी बातें बताई कि सचमुच जो जिनको जानकारी नहीं है, वो बहुत कुछ उसमें से वो लोग इकट्ठा कर पाए हैं। और जो माधव कौशिक जी ने बात कही थी, मैं भी यही दुष्यंत कुमार की ही बात लेकर चली थी कि शायद हिंदी गजलों में दुष्यंत कुमार के पहले शायद नहीं लिखी जा रही थी गजलें। और जो उन्होंने कही ना, जो सिंहासन से उतरने वाली बात और जो आम लोगों की भाषा को इस्तेमाल करने वाली बात दुष्यंत कुमार ने तो कही है, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। So it was something that he brought to the ordinary people and made it seem like the ghazal could be accessible to just about anyone who loved poetry. And Anisa, you beautifully summed up the entire webinar, sir. Thank you so much. Not only telling us about what is being written in English, but also a very nice gathering together of all the strands, which Anand Prakash so beautifully. He gave us a very good overview and a history about it. And of course, then we had Jaswinder ji and we had Mehfooz ji and Rashid ji, everybody who brought in their own perspectives, their own languages, and it was such a beautifully enriching webinar today. And I am so thankful to all of you. So I just needed to say this, although I'm not supposed to be saying anything at this point of time, but it was something that I needed to say. And Shamla ji, thank you so much for being with us. And like you say, we were able to bring together all these people because it is a webinar. Otherwise, everyone is scattered in so many places and people were already engaged in various meetings, but they just sort of squeezed out enough time to come and be part of us. So I would like to say thank you, and over to Nandini Sahu for the very formal thanks. Yeah, Professor Nandini Sahu, please. Thank you, Professor Mathur and Professor Pramod. After this important and interesting webinar, I really
don't know how to thank everyone from the bottom of my heart. Last 3 hours, I have been in this mood. If music is the food of love, play on, as William Shakespeare would have said. Yeah, we all are enjoying the seminar. Professor Pramod Kumar, thank you very much for hosting the wonderful webinar with a little bit of poetic and a little bit of personal touch, which is your signature style. I must thank you for that. Professor Malti Mathur, during your directorship, the school is going through a glorious time, and I must thank you for all these important webinars it is that you are having, and of course for this very important initiative on the Ghazal. Our Honorable Vice Chancellor, sir, we are extremely indebted to you for always motivating us and for your never say no attitude to the entire university, and especially for School of Humanities. You have this never say no attitude, and we are so grateful to you for having given us all these opportunities to hold these seminars and webinars and engaging discussions. Professor Anand Prakash, my very personal favorite teacher and scholar, sir, you said that Ghazal should have compelling brevity and wit and charm. I have been thinking about that. It's so interesting and so very important. And, also, you talked about Ghazal as a mix of classicism and folk, and also war music. In fact, I was taking notes when you spoke, and you know I always do that. I must thank you on behalf of School of Humanities and IGNOU for discussing this very important subject with us. And Professor Marizo Rashid, he talked about Kashmiri Ghazal, its spiritual traditions and the multi-layered love elements in it. I'm keen on reading more about it, and sir, you have created that interest in me and in all of us. So we are very, very grateful to you. We will carry it forward. And next is Professor Ahmed Mahfouz. He spoke about precisely on Ghazal as the food of love, music as the food of love. And it was a very, very interesting and important discourse, sir. I must congratulate and thank you on behalf of your school and university. Professor Jaswinder Singh Saini, he talked about Punjabi Ghazal tradition and the influence of Middle East on Ghazal traditions. It was definitely very important, a research paper, and we would like to read more about it. Thank you so much, sir. Professor Radha Vallabh Tripathi, you talked about Sanskrit Ghazal. Sir, your comparison between Sanskrit sonnets and Ghazal, it was very interesting. And I would like to learn so much from you on behalf of School of Humanities, IGNOU. Very special gratitude for you, sir. Professor Anishur Rahman, Professor Madhav Kaushik next. He talked about the Ghazal tradition in India and its multiple hues and colors. We thoroughly enjoyed your discourse, and we are indebted to you from the bottom of our hearts. Sir. And finally, Professor Anishur Rahman, for whom I have the deepest regard, and whose Rekta lectures and readings have greatly influenced me at a personal level. Sir, your musical discourse, you speak poetic prose. Your musical discourse on the English Ghazal and emphasis on translation, as these things are our takeaway today's seminar. Talked about American Ghazals, 20th century Ghazals, and you opened a wide area of research for us and for our students. I'm sure that the faculty members and students attending your lecture today would have been deeply benefited, and we would like to learn much more from you on the Ghazal tradition. Once again, I thank our Honorable Vice Chancellor, sir, for having given us this opportunity, and Professor Malti Mathur, and all our Honorable Pro Vice Chancellors, all the directors of the schools and divisions and centers, faculty members and staff of our School of Humanities, my family, and all the teachers and academics of the university, regional centers, study centers, our research scholars, our students, and the connoisseurs of poetry, the Ghazal. I would thank each one of you for having participated in this very, very important webinar. I congratulate the Center for Modern Indian Languages and School of Humanities for the successful completion of this important webinar. If I have left anyone inadvertently, my gratitude goes to each one of us, and thank you so much. Yes, thank you, Professor Nandini. We, thank all our distinguished experts once again. Team COE, they have given us all the technical support. Maybe we can mention Ahmed, Dr. Ahmed, he was constantly posting, and I know
enlightening our understanding on Urdu Ghazal, yes, or our faculty colleagues. Thank you very much. Maybe we can, with the permission of our director, we should close this session with a promise that we'll meet once again on our theme. Like, you know, I think Mother Kaushik Saab was saying that Ghazal is about 24 languages now and in India. So I think we have lots of ground to cover, and we'll meet each other like this once again, and with deepest of love, respect, and gratitude to all the people who joined through Google Meet and then the other social media platforms. We say goodbye to all of you for now. Thank you very much. Thank you.